Did you know that SQL is used by all the big companies such as Netflix, Google, Microsoft, Hotstar, Spotify, you name it. Every big company or virtually every company is using SQL for their back-end operations. So it is a very high demand job, and according to one survey, it is the highest in demand skill for you to get a job, and you can make anywhere from 5 lakh per annum to 25 lakh per annum in India. Since it is a very high demand job, even according to one survey, it is more in demand than Python. You can get a job as database administrator if you get all the concepts right. It will also help you to get those 20 marks from this unit if you just know how to write queries, how to find the outputs, and some basic concepts. So let's begin. In this video, we are going to cover all the previous year questions of Cbse starting from 2012 to 13, and we will be solving all the questions and will be getting their answers. Not just previous year questions, we will also be focusing on the sample paper of 2022-2023. Apart from that, we will also be working on model question papers provided by the Jammu region KVS. First of all, let's focus on this question here. This question was asked in Cbse 2012 to 2013, and the question says, what is the difference between degree and cardinality of a table? So as we all know that degree is nothing but number of columns and cardinality is nothing but number of rows. You can just count the number of columns and rows and get the answer. So the degree here is 1, 2, 3. So it is simply 3. And cardinality is 2. And if you were to define what degree is, you can simply write it can be defined as number of column in a relation. Simple as that. Focus on next question. Now such questions are very important for the Cbse board exams. It is always asked for 4 to 5 marks. So you have to focus on these two tables, table items, table traders, and you have to write queries for question B to G. So let's focus on what question B says. It says that you have to display the details of all the items in ascending order. So जब भी आपको सभी details, not just 1 or 2 column, but all the details print करानी हो, what you write is select star. Now from table name, which is items. Why items? Why not traders? Because you will only be printing details of all the items which is present in this table only. But again, there is another condition that you have to arrange everything in the order of item names. So simply write order by and then the column which is I name. Next, we have to print the item name and the price only. So these are the two columns that we have to print of all those items whose price. So there is additional condition. So we have to filter out the records and only print those records whose price is in the range of 10,000 and 22,000. So for this we have two options. Number one, we can simply write select. Now item name goes by I name. Price goes by price. I mean the name of the column is price. Next is from. Table name, which is items. Next. Now this query is going to print everything and all the records, and the columns that this query is going to print are I name and price. But we only need those records whose price is in the range. So we can write where price between 10,000 and 22,000. Alternatively, we could also write where price is greater than 10,000 and price less than 22,000. Let me write it down for you. We could also write select, again I name, price from items where price is greater than 10,000 and price less than 22,000. Moving on to next question. Next we have to display the number of items which are traded by each trader. So the expected output should be T01 2, T02 2, T03 1. Now as you can see here, there are two tables and we have to print
number of items which are traded by each trader, and if you look closely you will realize that कि आइटम्स टेबल के अंदर हर एक आइटम के कॉरस्पॉन्डिंग एक टी कोड लिखा है कि इसका ट्रेडर कौन है। सिमिलरली इसके आगे टी कोड लिखा है, अगेन टी कोड यहाँ लिखा है। नाउ व्हाट यू कैन डू इज you can simply count using count function how many records are there, but this won't serve our purpose. What we need to do is we need to count how many products this T01 is trading. So this can be done simply using all these T codes separately. For example, if you count T01, answer will be 2. Answer is correct. As you can see, T01 के सामने 2 लिखा है. Similarly, T02, 1, 2. Answer is 2, 1, 1. So what we can do is we can count them, but simply आप count function नहीं लगा सकते, आपको इनके groups बनाने पड़ेंगे. Why? क्योंकि आपको counting छोटे छोटे groups में करनी है, individually करनी है. So we will write select. Now T01, T02 corresponds to T code. Just write T code. Next, write count star. What it will do is it will count the number of records in the group that we are going to create. Next, write from table name which is items. Now इतनी क्वेरी आप लिखते हो तो ये क्या करेगा, ये सिंपली पूरी टेबल के रोज को काउंट करेगा, एंड टी कोड ये नॉर्मली क्या करेगा, पहले वाले टी कोड को उठाकर आंसर आपको कुछ इस तरीके से देगा. सबसे ऊपर आएगा आपका टी कोड, नेक्स्ट आपका आएगा काउंट स्टार, इधर आएगा T01 एंड इधर आएगा 5 जो हमें नहीं चाहिए. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे. ग्रुप्स कैसे बनते हैं, ग्रुप्स बनाने के लिए हमने पढ़ा था ग्रुप बाय क्लोज एंड ग्रुप बाय टी कोड. सो दिस क्वेरी इज गोइंग टू सर्व द पर्पस. ये क्या करेगी, ये आपका सभी टी कोड्स के अबाउट ग्रुपिंग कर देगा. सिमिलर टी कोड्स विल ग्रुप इनटू वन and the count will be displayed correspondingly. So this is the answer. Moving on to next question. So in this question you have to display the price, item name and quantity of those items which have quantity more than 150. So आपको ये तीनों चीजें price, item name and quantity items table के अंदर मिल जाएगी, but आपको make sure करना है कि quantity should be more than 150. तो simply write select price, item name is I name and quantity is QTY. Make sure आप उसी सीक्वेंस के अंदर चीज़ों को लिखो जिस सीक्वेंस के अंदर क्वेश्चन में दिया हुआ है. Of those items, so we have to filter out the records, but we need to write from table name which is items where the quantity which is QTY is more than 150. So इसके अंदर आपके तीनों कॉलम्स आ गए एंड सिर्फ वही रिकॉर्ड्स आएंगे जहां पर क्वांटिटी 150 से ज़्यादा है. एज वी डिस्कस्ड, वेयर क्लोज आपका रिकॉर्ड्स को फिल्टर करेगा, मतलब सिलेक्टेड रोज ही आपको देगा बेस्ड ऑन दिस कंडीशन. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ दोज ट्रेडर्स हु आर ईदर फ्रॉम दिल्ली और फ्रॉम मुंबई. सो नेम्स ऑफ ट्रेडर यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, लोकेशन यहाँ मिल जाएगी. So we are talking about traders table. So just write select T name, comma. Now see, you have to print just the names. So just write select T name from table name which is traders. Now you have to compare their city. So we will write where city is equal to Delhi or city is equal to Mumbai. One way is to write simply like this, Mumbai. Another way is using in operator. So you could also write select T name from traders where city in, you could write Delhi inside single quotes, comma Mumbai, quotes closed, semicolon. So आप इन दोनों तरीकों से काम कर सकते थे, जैसा कि हमने डिस्कस भी किया था. इन ऑपरेटर corresponds to multiple or statements. So where city is equal to Delhi or city is equal to Mumbai, you could write in operator as well. Next is display the names of the companies and names of the items in descending order of company names. So company name आपको कहाँ पर मिलेगा, company name इधर मिल गया items table के अंदर, and name of items I name
in descending order of company name. So this is again simple. Just write select company and दूसरी चीज जो आपको प्रिंट करनी है that is I name from टेबल नेम विच इज आइटम्स. अब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कंपनी नेम्स के अंदर लिखना है तो सिंपली राइट ऑर्डर बाय कॉलम नेम विच इज कंपनी. नाउ इतनी क्वेरी लिखेंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में देगा. सो जस्ट राइट DESC. सो दिस क्वेरी विल डू द जॉब. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन के अंदर आपको आउटपुट्स बताने हैं क्वेरी के. सो फोकस ऑन फर्स्ट क्वेश्चन. सिलेक्ट मैक्स प्राइस मिन प्राइस फ्रॉम आइटम्स. सो आउटपुट वाले क्वेश्चंस के अंदर what you have to do is you have to make a table and see there are only two things that we need to print. So just write them out. Write max price and again min price and go through the table items. So you can see the max price here is 38,000 and min price is 1200. तो मैक्स प्राइस में आप सिंपली लिख देंगे 38,000 एंड मिन प्राइस के अंदर सिंपली आ जाएगा 1200. दिस इज द करेक्ट आंसर. Next question, you have to select print into quantity and since ये आपका space डाल के amount लिखा है, this is the alias. So we need to make this as the heading of the column from items where code is equal to 1004 or 1004. So just write amount here. Why amount? Because this is the alias. एंड इसके अंदर वैल्यूज कैसे कैलकुलेट होंगी? प्राइस इंटू क्वांटिटी, बट सिर्फ उसी रिकॉर्ड की जहां पर कोड 1004 है विच इज दिस वन. यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई प्राइस विथ क्वांटिटी. सो 21,500 टाइम्स 50 विच इज 1075000. दिस इज द आंसर. आपको सिर्फ इतना लिखना था. Next, select distinct T code from items. So just write distinct space T code as the table header and in this column write different T codes. तो सबसे पहले आपका T code T01 आया, just write T01. फिर आपका T02 आया, write T02 and after that T03, write T03. You can also draw the lines accordingly. So please do this in a cleaner way. I'm just showing it to you how to do it. Next is select I name, T name from items space I, traders space T, where I.T code is equal to T.T code and quantity less than 100. So which kind of join is it? It is natural join, if you could remember. Okay. So इस केस के अंदर what we will do is we are going to join these two tables. First of all, write the column headings, which is simply write I name and T name. All right, and join these two tables. So जब भी हम joining करते हैं, अगर आप यहाँ तक ही फोकस करें, so this is kind of a cross join. And cross join के अंदर अगर पहले टेबल लिखी थी items, तो इसको इन सभी के साथ मैच किया जाएगा, इसको फिर से तीनों के साथ मैच किया जाएगा. बट अगेन हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? जहाँ पर दोनों का टी कोड बराबर है. तो जब आपका ये रो लिखा जाएगा, इसके बाद जब T01 अगेन आएगा, टी नेम आएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक सेल्स मुंबई, तो सिर्फ यही रो आपका फाइनली सिलेक्ट किया जाएगा बिकॉज द टी कोड्स इन बोथ द टेबल्स आर सेम. दूसरा वाला T03 इसके सामने नहीं आएगा एंड T02 भी इसके सामने नहीं आएगा. ओके, तो हमें पता चल चुका है कि किस तरीके से आंसर आने वाले हैं. नेक्स्ट थिंग इज वेयर क्वांटिटी लेस देन 100. क्वांटिटी लेस देन 100 किस किस का है? 70, 50, ओनली दीज टू. तो आंसर के अंदर भी इन्हीं दो रोज की बात होने वाली है. तो सिंपली राइट दी आई नेम विच इज LED स्क्रीन 40 and the T name कैसे पता चलेगा आपको? Just see the T02 written here and T02 के सामने क्या लिखा है? Disp house inclusive. So disp house inclusive. Next, अगर आप देखें तो quantity less than 100 इन दोनों की थी, तो focus on this one. So write car GPS system and corresponding T name can be given from
this T01, which is electronic sales. So this is the answer. So next question is, what is the difference between primary key and alternate key of a table with the help of an example? In such questions, what you need to do is make a table, write primary key on the one side, alternate key on the other side, and write these two or three differences. Since this is of 2 marks, you can write 2 to 3 differences, and the example can be given as, you can just pick any table given in your question paper and mention the keys which can be selected as primary key and keys which are alternate keys. Focus on next question. What you have to do is, you have two tables here, applicants and courses, and you have to, first of all, you have to write the queries for B, C, D, E, F, G, and after that you have to write the outputs. So how would you write the query for this one? What you need to do is, you have to display the name, fee, gender, join year of the applicant. Applicant data is given in this table, who have joined before 2010. So जिनकी डेट ऑफ ज्वाइन 2010 से पहले की है, आपको उनको क्या करना है, उनका डेटा प्रिंट कराना है. तो आंसर वुड बी, just write select. First column name is name, so write name. Next is fee, then gender, who have joined before 2010. So you can just write where join of year is less than 2010. Moving on to next question, you have to display the names of applicants who are paying fee more than 30,000. So name of applicants आपका applicant table से आएगा, name column से, and fee greater than 30,000. So answer would be, select name from applicants where fee is greater than 30,000. Moving on to next question, you have to display names of all applicants in ascending order of their join year. So again, names आपके पास applicants table के अंदर से आ जाएंगे. What you have to do is just print them in ascending order. So you will write select name from applicants order by join year. Next part, to display the year and total number of applicants joined in each year from the table applicants. So आपको year display कराना है and total number of applicants. So you have to count them as well. Joined in each year. Again, this is similar question as we discussed earlier. आपको year wise groups बनाने पड़ेंगे and उसके बाद count करना पड़ेगा. So the answer would be, select year, comma, count star from applicants group by join year. This is again a simple query. In order to print course ID and the number of applicants, what you can do is, you only need this C underscore ID and number of applicants. So you have to group them, just we did in the last few questions. So what you will write is, select C underscore ID, comma, count star from applicants group by C underscore ID. That's it. Moving on to next query, display the applicant's name and the respective courses. Now आप यहाँ देख सकते हो, applicant name is present in the applicants table and the course name is present in this table. Table name is courses. So you'll have to combine these two tables using any of the join. So you can write select name, comma, course from applicants, comma, courses, where the condition जो आपको देनी पड़ेगी क्योंकि आपको दोनों को join करना है, where applicants.c underscore id is equal to courses.c underscore id. After grouping, what you have to do is, you have to give the outputs. Now focus on this query. Select name, comma, join year from applicants where gender is equal to F and C underscore ID is equal to A02. For this, what you need to do is, from applicants table, write name, then join year from applicants where gender is equal to female and C underscore ID is A02. A02 के अंदर gender female A02. There is only one record. So the output will be name Avisha, join year
2009. That's it. Moving on to next query. You have to print minimum of join year from applicants. So इस टेबल के अंदर से आपको मिनिमम आपको प्रिंट करना है इन सभी में से. So minimum of these values where gender is equal to female. Answer 2009. Select AVG of fee from applicants where C underscore ID is equal to A01 or C underscore ID is A05. So in this case, what you need to do is find the average of all these values where candidate C underscore ID is either A01 or C underscore ID is A05. So first of all, let's highlight. As you can see is A01 is here, A05 is here, A01 is here. So there are only 3 rows. So the average of fee for these 3 will be 30,000 plus 40,000 plus 25,000 divided by 3. So 30,000 plus 40,000 plus 25,000 by 3. So just write this. Next, you have to select sum of fee, comma C underscore ID from applicants grouped by C underscore ID having count star equal to 2. So first of all, focus on the applicants table. In the applicants table, you need to group by C underscore ID. So one group would be this and this. Another group would be A02, A02, A02. Next group would be A03, A03, A03. Next group would be, let's take this color, A05. And last one, A04. So you have these groups. What you need to do is first print the sum and then the respective course ID. But again, the count should be equal to 2. So let us see किस किस ग्रुप के अंदर टोटल नंबर ऑफ रोज 2 है. सो अगर A01 की बात की जाए 1 2, तो A01 आपका ओके है. A02 गलत हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर 3 आपके आ रहे हैं. A03 भी गलत हो गया. A04 भी गलत क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 1 है. A05 भी. So we are talking about only one group which is A01. So what we'll print is sum of fee and course ID would be A01 and sum of fee would be 30,000, this value here, plus 25,000 which is 55,000. Moving on to next. So this question was asked in Cbse 2013-14 examination. So again you have two tables, book and member, and जो उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है वो आपके सिलेबस में नहीं है बट आपको इसके अंदर डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ रिजल्ट टेबल पता होनी चाहिए. सो अगेन डिग्री इज नंबर ऑफ कॉलम विच इज 1 2 3 4 5. डिग्री इज 5 एंड कार्डिनलिटी विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9. कार्डिनलिटी वुड बी 9. सो 5 इज द डिग्री, 9 इज द कार्डिनलिटी. इसके अंदर इतना ही था हमारे काम का, इसको हटा देते हैं. Now focus on this one. You have to write the queries for again 1 to 5 and after that we need to find outputs. So focus on this one. So display details of all transactions of type credit from table transaction. तो इस टेबल पर फोकस करें और हमको सभी डिटेल्स, इट मीन्स ऑल दी कॉलम्स प्रिंट कराने हैं ऑफ टाइप क्रेडिट. सो जस्ट राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांजेक्शन वेयर टाइप इज इक्वल टू क्रेडिट. तो इसके अंदर रिजल्ट में आपका 1 2 3 ये 3 रोज आ जाएंगे बट हमको तो सिर्फ क्वेरी लिखनी थी. दिस इज इनफ. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन. डिस्प्ले द सी नंबर एंड अमाउंट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस डन इन द मंथ ऑफ सितंबर 2017 फ्रॉम द टेबल ट्रांजेक्शन. सो अगेन एक ही टेबल पर फोकस है हमारा एंड आपको प्रिंट करना है सी नंबर एंड अमाउंट डन इन द मंथ ऑफ सितंबर 2017. अब ये मंथ कैसे आएगा? अगर आपको याद हो हमने एक ऑपरेटर पढ़ा था लाइक ऑपरेटर, जो क्या करता था, जो कि पैटर्न मैच करता था. लाइक ऑपरेटर जिसको आप वेयर क्लोज में लिखते थे एंड उसके बाद आपको लिखना पड़ता था वो कॉलम जिसके अंदर आपको मैचिंग करनी है. तो अगर मैं डेट की बात करूं जिसके अंदर आपका मंथ सितंबर हो, ईयर 2017, आप सभी को याद होगा ईयर का फॉर्मेट होता है YYYYMMDD. सिंस क्वेश्चन के अंदर ईयर और मंथ फिक्स कर दिया गया है तो आई कैन राइट वेयर 2017 डैश. नाउ सितंबर मींस
09। नाउ आगे कुछ भी हो सकता है, सो आई एम जस्ट राइटिंग परसेंट। सो अगर मैं ये लिख दूं तो मेरा काम हो जाएगा। द आंसर वुड बी इज सेलेक्ट सी नंबर comma amount from transaction where DOT like got 2017 dash 09 dash percentage. Now this dash is again optional. आप इसको लिख भी सकते थे, नहीं भी, but make sure you always write dash. Next question. To display the last date of transaction from the table transaction for the customer having C number as 103. What is the meaning of last date? Last date is the latest one. Latest date. Now latest date जब भी हमको find out करनी होती है, we are talking about max date. तो अगर आप सिर्फ max फंक्शन का यूज करके डेट फाइंड आउट कर लें तो आपका काम हो जाएगा। सो इसके अंदर you have to print the last date. So just write select max dot from transaction where C number is equal to 103. So 103 की लास्ट डेट आप देख सकते हो, यहाँ पर 103 नाम से दो रिकॉर्ड्स हैं एंड एक ने ट्रांजैक्शन किया था 12 मई 2017, एक ने किया था 12 सितंबर 2017। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन। नेक्स्ट, display all C number, C name and DOT. So only 3 columns have to be printed of those customers from table customer and transaction. It means we have to combine these two tables who have done transactions more than or equal to 2000. So सबसे पहले आपको पता लग जाना चाहिए कि इसके अंदर C नंबर जो कि आपका दोनों टेबल में से किसी से भी आप ले सकते हो, दोनों में कॉमन है। सी नेम अगेन कस्टमर टेबल से आएगा एंड डीओटी जो कि इस टेबल से आएगा। सो वी हैव 3 कॉलम्स टू प्रिंट एंड 2 टेबल्स हैं, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। द बेस्ट वन इज द नेचुरल ज्वाइन। अब एक चीज आपको ध्यान देनी है, क्योंकि हम सी नंबर प्रिंट करा रहे हैं और सी नंबर दोनों टेबल्स के बीच में है, तो मेक श्योर यू ऑल्सो राइट टेबल नेम विद इट। सो राइट सेलेक्ट कस्टमर डॉट सी नंबर comma C name comma DOT from customer comma transaction where customer dot C number is equal to transaction dot C number and amount is greater than 2000. So ये आपको क्या देगा, उन सभी कस्टमर की डिटेल्स देगा जिन्होंने 2000 से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन की है। ट्रांजैक्शन आपका इस कॉलम से आ रहा है एंड इस तरीके से आप दोनों टेबल को कंबाइन करके कंडीशन लगाकर रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट वन, सेलेक्ट काउंट स्टार। Now next we have to find out the outputs of the given query. So select count star. It means we are going to count everything. AVG amount from transaction where DOT is greater than equal to 2017 06 01. It means हमको वो सभी एक रिजल्ट काउंट करना है एंड एवरेज काउंट करना है अमाउंट का, जहां पर DOT इस डेट से ज़्यादा है या इक्वल है। तो ट्रांजैक्शन टेबल के अंदर आप आ जाइए, DOT के ऊपर आ जाइए, 1 जून 2017 के बाद वाली डेट्स को हाईलाइट कर लेते हैं। तो 1 जून 2017 के बाद की डेट है ये और ये। अब इन सभी के अंदर आपको इनका एवरेज काउंट करना है, इनके अमाउंट का एवरेज काउंट करना है एंड काउंट स्टार तो आप देख ही पा रहे होंगे, आंसर विल बी 4। तो द आउटपुट विल बी काउंट स्टार एवीजी अमाउंट, काउंट स्टार की वैल्यू 4 एंड एवरेज वुड बी 4375। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। In this question you have to print C number, count star and max amount from transaction table. So transaction table ये रही आपकी, group by C number having count star greater than 1। अब आपको पता होना चाहिए having clause तब यूज किया जाता है जब आपके ग्रुप्स बन गए हो। तो C number, count star, max amount, group by C number। तो पहले ग्रुप्स देख लीजिए कौन कौन से हैं। ग्रुप्स विल बी, एक ग्रुप आपका 101 वाला ग्रुप, एक आपका 102 वाला ग्रुप एंड एक आपका 103 वाला ग्रुप। अब इसके अंदर एक से ज़्यादा वाला काउंट किसका है,
एक से ज़्यादा काउंट है आपका सिर्फ और सिर्फ 101 एंड 103 का 102 विल बी नॉट कंसिडर्ड। तो हमारे पास जो आंसर आएंगे वो आएंगे ओनली फ्रॉम ग्रुप 101 एंड 103। सो पहले लिखा आएगा सी नंबर के अंदर 101, काउंट स्टार जो आएगा आंसर इज 2। मैक्स अमाउंट, अब उस ग्रुप के अंदर ही मैक्स अमाउंट किसका है, तो 101 के अंदर दो अमाउंट्स आपके पास है 1500 और 1000, मैक्स इज 1500, आंसर विल बी 1500। नेक्स्ट ग्रुप 103 एंड अमाउंट विल बी 12000 एंड काउंट विल बी अगेन 2। आगे चलते हैं। सेलेक्ट सी नंबर सी नेम फ्रॉम कस्टमर वेयर एड्रेस नॉट इन दिल्ली कॉमा बैंगलोर। तो आपको फोकस करना है कस्टमर, फ्रॉम द कस्टमर टेबल फोकस ऑन दिस कस्टमर टेबल and you have to print C number and C name where address not in Delhi or Bangalore। तो दिल्ली एंड बैंगलोर वाले को आप स्किप कर दीजिए एंड सिर्फ आपके पास रो नंबर 102 105 के रिकॉर्ड्स ही आएंगे। नाउ सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सी नंबर फ्रॉम ट्रांजैक्शन, ये तो आपको पता ही होगा, हमें डिस्टिंक्ट सी नंबर ट्रांजैक्शन टेबल से प्रिंट करा देने हैं and as you can see there are only three distinct C numbers. Number one is 101, 103 and 102. That's it. Moving on to next one. Now this question was asked in Cbse 2014-15 examination and this one is very easy. It just says, it just asks कि इस टेबल के अंदर नेम ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉलम विच कैन बी कंसिडर्ड एज कैंडिडेट की एंड प्राइमरी की। तो अगर आपको याद हो, कैंडिडेट कीज आर ऑल दोज कॉलम्स विच कैन बी यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई एनी पर्टिकुलर रिकॉर्ड। सो इसके अंदर कैंडिडेट की सिर्फ वही कॉलम बन सकता है विच हैज़ यूनिक एंड नॉट नल वैल्यूज। सो आप यहाँ पर देख सकते हो सी जो आपका कोड है, it can be a candidate key. Can the item be a candidate key? Answer is yes, it has unique values. Now primary key, इन में से primary key कौन सा होगा? Answer is code. Why? क्योंकि it is confirmed that all the values in this column will be unique. बाकियों के अंदर repeat हो सकती हैं। Moving on to next question. Now focus on these two tables, department and employee. Again you have to write queries and find outputs. Same question as before and ऐसे ही questions आपको पेपर में मिलेंगे इस बार. So please prepare them. So these two tables. Number one, display E number, name, gender from table employee. Focus on this table employee. You have to print E number, name and gender in ascending order of E number. So just write, select E number, comma name, comma gender from employee, order by E number. Simple. Moving on to next one. Display the name of all male employees from the table employee. So you have to just print name. So write select name from employee where gender is equal to male. Moving on to next slide. Now you have to display E number and name of all those employees from the table employee who are born between this and this. So in order to do this, all you need to do is just write select E number, name from employee. Now for the second part, who are born between 1987, 01, 01 and this, again you can either write between operator or the normal where condition with less than and greater than symbol. Hence the solution will be select E number, name from employee where DOB, which is date of birth, between 1987 0101 and 1991 1201, or alternatively you can also write select E number, name from employee where DOB greater than 1987 0101 and DOB less than 1991 1201. Simple enough. Now fourth part. In this you have to count and display female employees who have joined after 1986 0101. So first of all you need to count and you need date of joining
एंड जेंडर। सो ये सब आपको एम्प्लॉय टेबल से मिल जाएगा। जस्ट राइट सिलेक्ट काउंट स्टार कॉमा जेंडर फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर जेंडर इक्वल टू फीमेल एंड DOJ is greater than 1986-01-01। सो ये दो क्वेरीज क्या करेंगी कि जिन फीमेल्स एम्प्लॉइज की डेट ऑफ ज्वाइनिंग इस डेट के बाद है 1986-01-01, आपके सामने उनका काउंट आ जाएगा। हमने जेंडर कॉलम क्यों प्रिंट कराया? ताकि हमें पता लग सके कि जेंडर क्या है, कि मेल तो काउंट नहीं हो गया, फीमेल काउंट हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमको अगेन आउटपुट बताना है। सिलेक्ट काउंट स्टार डी कोड। दो कॉलम्स आपके पास आएंगे, काउंट स्टार एंड डी कोड, एंड यू हैव टू ग्रुप देम अकॉर्डिंग टू डी कोड। सो एम्प्लॉय टेबल के अंदर ग्रुप्स देखिए कितने हैं। एक तो आपका D01, D03, D05, D04। बेसिकली देर आर 4 ग्रुप्स। एंड अगेन जो आपका D01 है वो एक ग्रुप बन गया इधर, D02 अगेन एक यूनिक ग्रुप, एंड D05 इधर मैच हो गया। बट आपको सिर्फ उन्हीं को प्रिंट कराना है जिसका काउंट 1 से ज़्यादा हो। तो बेसिकली आपका D02 क्रॉस हो जाएगा, D04 क्रॉस हो जाएगा, D03 क्रॉस हो जाएगा। तो बेसिकली ओनली 2 ग्रुप्स are going to be printed in the output, D01, D05. So D01 का काउंट आएगा 2 एंड D03 का D05 का काउंट आएगा अगेन 2। So next query, select distinct department from department. So focus on department table and distinct department. As you can see here, all the values are distinct. So the answer will be department, infrastructure, marketing, media, finance, human resource. Next question, select name department from employee space E, this is the alias, department space D, again alias, where E dot D code is equal to D dot D code and E number is less than 1003. So basically आप एक टेबल बनाएंगे, टेबल का हेडिंग होगा नेम एंड डिपार्टमेंट, कॉलम दो होंगे, एक का नाम होगा नेम, एक का होगा डिपार्टमेंट। दोनों के अंदर आप डी कोड और ई कोड को कंपेयर करेंगे। अगेन जैसा कि हमने लास्ट टाइम किया था, जब इनको हम नॉर्मली ज्वाइन कराएंगे तो यू ऑलरेडी नो कि सबसे पहले, क्योंकि आपका एम्प्लॉय लिखा है तो पहले आपका ये वाला रो आएगा एंड इसके सामने ये चारों रोज, पांचों रोज आएंगी। बट सिंस वी हैव अप्लाइड अनदर इक्वालिटी कंडीशन, तो इसके सामने सिर्फ वही रो आएगा जिसका डी कोड मैच करेगा। ओके, फेयर इनफ। प्लस ई नंबर इट शुड बी ग्रेटर देन 1003। सो आप इसको कट कर दो, इसको कट कर दो, and this, these 5 rows will be there. So the answer will be this. Okay, moving on to next question. Select max DOJ and min DOB from employee table. So DOJ का max means the recent date, the latest date. So इनके अंदर 2014 की ये वाली डेट is the most recent one. So answer will be max DOJ 2014-06-09 and minimum date of birth जो सबसे पुरानी डेट ऑफ बर्थ होगी, so 1900 I think 84, this is the minimum date of birth. Okay, moving on to next question. ये भी आसान क्वेश्चन है। इसके अंदर पूछा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट की फॉर कैंडिडेट की। सो आईडी के अंदर सभी वैल्यूज यूनिक हैं, डिफरेंट है एंड नल नहीं है, इट कैन बी अ कैंडिडेट की। सिमिलरली प्रोडक्ट के अंदर भी आपके सभी वैल्यूज अलग हैं एंड नॉट नल, इट कैन बी अ कैंडिडेट की। सो कैंडिडेट की के अंदर आईडी, प्रोडक्ट आ सकता है, बट प्राइमरी की के अंदर कौन सा कॉलम आएगा? ऑब्वियसली आईडी, क्योंकि हम सभी को पता है द वैल्यूज विल सर्टेनली बी यूनिक, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट का फ्यूचर में जाकर रिपीट वैल्यू अगर आता है इट विल नो लॉन्गर बी अ कैंडिडेट की। बट प्राइमरी की ऐसी की होती है जो कि पूरी टेबल के अंदर वैल्यूज चेंज नहीं करती। नाउ वी हैव अनदर टेबल जिसके अंदर आपको सेम ऑपरेशन करना है। इसके अंदर दो टेबल हैं, डिपार्टमेंट एंड वर्कर। अगेन यू हैव टू राइट क्वेरीज, प्लीज फोकस ऑन दिस फर्स्ट क्वेरी।
यू हैव टू डिस्प्ले W नंबर, नेम, जेंडर फ्रॉम वर्कर टेबल। तो वर्कर टेबल आपके पास ये रही, W नंबर ये रहा, नेम ये रहा, जेंडर ये रहा। इन तीनों कॉलम को आपको प्रिंट कराना है फ्रॉम वर्कर टेबल इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ W नंबर। सो सिंपल है, सिलेक्ट W नंबर, name, gender from worker, order by W number, and for descending you will write DESC. Next question, display the name of all females from table worker. So simple है, आपको सिर्फ name print कराना है, nothing else, only print कराना है आपको name, and उनका ही नाम print कराना है जिनका gender क्या है, female है। तो simply write select name from worker where gender is equal to female। ये भी काफी easy question था। Focus on next one. Display W number and name. So basically W number and name आपको प्रिंट कराना है। अभी ये रहा नेम प्रिंट कराना है of those workers who were born between these dates. So date of birth वाले कॉलम को आप देखेंगे and you will just write select W number, name from worker where DOB between 1987-01-01 and 1991-12-01। इसकी जगह पर आप एक और क्वेरी लिख सकते थे, select W number, name from worker where DOB greater than 1987-01-01 and DOB less than 1991-12-01। सो इन दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन यू जस्ट हैव टू काउंट एंड डिस्प्ले मेल वर्कर्स हु जॉइंड आफ्टर दिस डेट। सो ये डेटा कहाँ से मिलेगा? आपको पहली चीज तो जेंडर के अबाउट फिल्टरिंग करनी है और काउंट करना है। तो यू विल राइट सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम वर्कर वेयर जेंडर इक्वल टू male and DOJ is greater than 1986-01-01। ये क्वेरी क्या करेगी? आपको काउंट करके बताएगा कि कितने मेल वर्कर्स ने इस डेट के बाद ज्वाइन किया। अगर आप चाहो तो एक एडिशनल कॉलम भी प्रिंट करा सकते थे जिसके अंदर जेंडर लिखा होगा, बट दैट इज कंप्लीटली ऑप्शनल। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेरी। इसमें आपको आउटपुट बताना है, सिलेक्ट काउंट स्टार डी कोड, मतलब दो कॉलम्स आएंगे, काउंट स्टार एंड डी कोड फ्रॉम वर्कर ग्रुप बाय डी कोड हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 1। इसके अंदर सिमिलर क्वेश्चन है आपका, डी कोड के ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। डी कोड और कौन सी टेबल है आपके पास? वर्कर। तो डी कोड के अंदर एक ग्रुप है D01, एक ग्रुप आपका है D03, एक ग्रुप आपका है D05, एक हीरा एलिमेंट, एक ग्रुप आपका बन जाएगा D04 और एक बन जाएगा आपका D02। नाउ एक चीज पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, विच इज हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 1। इसका मतलब सिर्फ यही है कि सिर्फ उन्हीं ग्रुप्स को प्रिंट कराया जाए जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक से ज़्यादा है। इट मीन्स वो एलिमेंट, वो ग्रुप्स जिसकी काउंटिंग, जिसके अंदर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एक या एक से कम होंगे। वैसे एक से कम तो नहीं हो सकते, अगर एक भी होगा तो आंसर नहीं आएगा। तो ऐसे कितने ग्रुप हैं? D04 गलत हो गया, D02 गलत हो गया एंड D03। So basically winners are only these two, D01 and D05। So सिर्फ यही ग्रुप्स के ऊपर आपको काम करना है एंड यू हैव टू जस्ट प्रिंट काउंट स्टार एंड डी कोड। सबसे पहले आएगा 2, डी कोड के अंदर आएगा D01, नेक्स्ट ग्रुप इज D05, so count will be 2 and decode will be D05। ये क्वेश्चंस बिल्कुल सिमिलर हैं, इसीलिए हम इसको जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं। अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं तो प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम डिपार्टमेंट। ये भी क्वेश्चन सिमिलर है, आपको कुछ नहीं करना, डिपार्टमेंट टेबल के ऊपर जाना है एंड डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट्स को प्रिंट करना है। दिस क्वेश्चन इज सिमिलर, सो वी आर स्किपिंग इट, सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन वी डिस्कस्ड। सेलेक्ट नेम डिपार्टमेंट सिटी फ्रॉम वर्कर। अब इसके अंदर आपने दोनों टेबल्स को ज्वाइन किया। नेम, दोनों टेबल्स पे फोकस करते हैं, देख सकते होंगे
कि एक तो आपका नेम आ गया, डिपार्टमेंट, नाउ डिपार्टमेंट आपका इस टेबल के अंदर है, एंड सिटी आपका इसी टेबल के अंदर है, where d code where w.d code is equal to d.d code and w number is less than 1003। तो सबसे पहले फोकस करते हैं w नंबर 1003 से किसका है, तो 1002 1001, ये दोनों आपके वैल्यूज कम हैं। अब इसके अंदर भी प्लीज मेक श्योर कि जब भी आप दोनों को ज्वाइन करें तो डी कोड जो दोनों यहाँ पर हैं इधर भी आपके होने चाहिए। ओके, अब हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। वी विल जस्ट राइट देयर विल बी 3 कॉलम्स, नेम, डिपार्टमेंट, सिटी। नेम के अंदर आएगा जॉर्ज के, डिपार्टमेंट विल बी, यहाँ से आप देख सकते हो, मीडिया, एंड सिटी विल बी दिल्ली। सेकेंड रो राइमा सेन, आपका डिपार्टमेंट आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिटी विल बी मुंबई। इजी क्वेश्चन, मेक श्योर आप इसके अंदर आंख बंद करके आंसर ना लिख दें। कंपेयर ऑल दी कॉलम्स, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस में ऐसा देखा गया है कि यहाँ पर अगर D00, D01, D03 दिया होगा तो मे बी यहाँ पर कोई एक रो स्किप भी हो सकता है, तो उस केस में आपको ये वाला भी नहीं लिखना होगा। बट क्योंकि यहाँ पर दोनों प्रेजेंट थे तो हमने दोनों का आंसर लिख दिया। ऐसे क्वेश्चंस आपको अभी मिलेंगे थोड़ी देर के बाद। लास्ट वन इज सेलेक्ट मैक्स DOJ मिन DOB फ्रॉम वर्कर। ये भी आपको पता है, मैक्स DOJ मतलब रीसेंट वन, मिन मतलब ओल्डेस्ट वन, तो इसको भी आप लिख सकते हो। वी आर ऑल्सो स्किपिंग इट। नेक्स्ट CBSE क्वेश्चन पेपर 2015-2016। इसके अंदर अगेन यू हैव 2 टेबल्स, व्हीकल एंड ट्रेवल, एंड इसके अंदर डेटा दिया हुआ है एंड यू हैव टू राइट क्वेरीज फॉर 1 to 4 एंड आउटपुट्स फॉर 5 to 8। सो फॉर नंबर 1 क्वेश्चन इज to display number, name, t-date from table travel in descending order of number। This is a very simple query। आपको table travel के अंदर जाना है and you just have to print number, which is number, then name and t-date। So you just need to write select number, name, t-date from table name, which is travel, order by number, and since it is descending order also write DESC। Next question, here you have to display the name, just have to display the name of all travelers from table travel who are traveling by vehicle with code 101 or 102। now आपको travel टेबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ उनके नाम प्रिंट कराने हैं जो कि व्हीकल नंबर, जो कि आपको कहाँ से मिलेगा, इधर से मिलेगा नंबर से 101 या 102 से ट्रैवल कर रहे हैं। तो बेसिकली आपके पास 101 जैनिश। ओके, सो आपको इसके अंदर क्वेरी लिखनी है। जस्ट राइट सेलेक्ट नंबर, नेम, टी डेट वेयर नंबर इक्वल टू 101 और नंबर इक्वल टू 102। दूसरा तरीका क्या है, यस, इन ऑपरेटर, जिसके अंदर आप क्या करते थे, आप लिखेंगे सेलेक्ट नंबर, नेम, टी डेट फ्रॉम ट्रैवल वेयर नंबर इन राउंड ब्रैकेट 101, 102। थर्ड वन, you have to display number and name of those travelers from table travel who traveled between these two dates। अगेन वेरी सिमिलर क्वेश्चन जो हम पहले कर चुके हैं। इसमें सिंपली क्या आएगा, सेलेक्ट नंबर कॉमा नेम फ्रॉम ट्रैवल वेयर टी डेट बिटवीन 2015-12-31 and 2015-04-01। Another way, can you guess it? Yes, it is select number comma name from travel where, यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 दिसंबर 2015 लिखा है, तो डेट इससे छोटी होनी चाहिए। तो यू विल राइट विद टी डेट लेस देन 2015-12-31 and टी डेट greater than 2015-04-01। Fourth question,
Display the details, all the details. It means you have to write star from table travel for the travelers who have traveled distance more than 100 kilometer in ascending order of NOP. Very simple question. What you need to do is you have to write select star from table name, which is travel, where. Now look at the distance which is given here in the kilometer, where kilometer is greater than 100, and in the end write order by NOP. So this completes your query. जैसा यहाँ पर लिखा है आप बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे. ऑर्डर बाय हमेशा लास्ट में आता है. फिफ्थ क्वेरी. अब फिफ्थ के अंदर आपको यू हैव टू सिंपली राइट दी आउटपुट्स. सो हाउ विल यू डू दैट? सिंपल. सेलेक्ट काउंट स्टार comma code from travel group by code having count star greater than 1. ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो हम पहले कर चुके हैं. इसका आंसर आएगा, आपको सबसे पहले तो ग्रुप्स बनाने हैं अबाउट कोड. अब ट्रैवल टेबल थी, कोड आप ग्रुप्स बना लीजिए. कोड कॉलम के अंदर 101, 103, 102 एंड 105, 104. देयर आर बेसिकली 5 ग्रुप्स एंड लास्ट की कंडीशन हमें क्या बता रही है? सिर्फ उन्हीं का डेटा प्रिंट करना है जहां पर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आर मोर देन 1. तो बेसिकली इसके अंदर ऐसे सिर्फ 2 ही रोज आपको मिलेंगे, 2 ही ऐसे ग्रुप्स मिलेंगे जो कि जिसके अंदर काउंट स्टार की वैल्यू 2 से ज़्यादा होगी. जैसे कि 101 की वैल्यू 2 टाइम्स आ रही है, 102 की वैल्यू 2 टाइम्स आ रही है, बाकी सभी 1 टाइम आ रहा है, तो ये आंसर में नहीं आएगा. सो जो आपके पास टेबल आएगी उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 101, 102 ही होगा. काउंट पहले प्रिंट कराएंगे, काउंट आएगा 2 एंड कोड बाद में उसका प्रिंट हो जाएगा. नेक्स्ट इज सेलेक्ट a डॉट कोड कॉमा नेम कॉमा वी टाइप फ्रॉम ट्रेवल स्पेस a व्हीकल स्पेस b where a डॉट कोड इज इक्वल टू b डॉट कोड एंड किलोमीटर लेस देन 90. ये क्वेश्चन भी पहले कर चुके हैं. इसके अंदर आपने दोनों टेबल्स को ज्वाइन करा दिया. किस टाइप का ज्वाइन है आपका? ये है नेचुरल ज्वाइन. एंड ये जो a यहाँ पर दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट एलियस दैट वी क्रिएटेड हियर. ये जो आपको ट्रैवल a दिख रहा है, बस ये ट्रैवल टेबल की बात हो रही है. तो वी आर सिंपली राइटिंग सेलेक्ट ट्रैवल डॉट कोड, मतलब ट्रैवल टेबल के अंदर कॉलम कोड. नेम, अभी नेम दोनों के अंदर किसी एक में ही होगा, तभी इन्होंने सिंपली नेम लिखा है. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेम आपको यहाँ पे मिल जाएगा. नेम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. नेक्स्ट इज वी टाइप फ्रॉम ट्रैवल A ट्रैवल B वेयर दीज 2 वैल्यूज आर मैचिंग. विच 2 वैल्यूज? कोड कॉलम एंड किलोमीटर इज लेस देन 90. तो सिंपली हम पहले किलोमीटर चेक कर लेते हैं किसका 90 से कम है. सो सबसे पहले किलोमीटर लेस देन 90, only 1, 2, these 2 rows. So we will be working on these 2 rows only. What we have to print is just code, name and v type. So we can make 3 columns with code, name, v type. So here's the code, name and v type. And only these 2 rows are to be considered, and we are joining these 2 with the help of one common column which is code. So focus on 104, 105, 104, 105. Both are present in the vehicle table, so we can easily write down both the rows. So we will just write in the one column there will be code 105, V type SUV and name would be Ravina. In the next row code will be 104, V type will be car and the name would be Ahmed Khan. Moving on to next question. We have to print number 1 name, number 2 we have to print kilometer multiply by per kilometer. From travel A, vehicle B, these are aliases that been given to these 2 tables. So travel का alias है A and vehicle का alias है B, where A dot code is equal to B dot code and A dot code is equal to 105. तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ें चेक कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन 2 टेबल्स को ध्यान से देखिए. ओके, सो फॉर A डॉट कोड 105, सो A है आपका व्हीकल 105, इस रो की बात हो रही है. हमने इसको किसके अबाउट ज्वाइन किया है?
हमने इसको कोड के अबाउट ज्वाइन किया है, तो 105 आपका ये वाला रो है। तो आपको इन दोनों के साथ काम करना है। तो नेम आपका रवीना, किलोमीटर टाइम पर किलोमीटर, सो किलोमीटर इज 80, times per kilometer is 40, so you multiply these two, you get 3200. So the answer will be, in one column you get Ravina and in another you get 3200. Moving on to next query. This was the last query. Moving on to the questions of 2016-17. Focus on these two tables. Again, we have two tables and we have to first write queries and then we have to write the outputs. So there are two tables, DVD and member, and first we have to write query to display all details. Again, all details means star from table member. So we are essentially talking about this table member in descending order of issue date. So just write select star from member, order by issue date, and when you are writing, when you have to display in descending order, write DESC. Next query, display D code and D title of all folk type DVDs. So folk type DVDs means we have to look into D type column and DVD table. Okay, from the table DVD, we have to just print number one D code and D title. So basically you have to print details of all those DVDs where D type is folk. So we can simply do this. The query is select star from DVD where D type is equal to folk. Easy enough, right? Next question, question number 3. To display the D type and number of DVDs in each D type from table DVD. So notice this word each D type. It means we have to display D type and number of DVDs. So we have to group the table about D type. So the query will be select D type, comma count star, because the number of DVDs can be counted using count star, from DVD table का नाम, group by D type. Easy question. Moving on to next query. Here you have to display all name and issue date. So name is here, issue date is here, of those members from the table member, so table is member, who have DVDs issued, that is issue date in the year 2017. So basically we have to match the pattern now. In order to match pattern, we have one operator known as like operator. So and if we have to, अगर हमें 2017 को ही कंपेयर करना है, तो आपको पता है क्वेरी शुड स्टार्ट फ्रॉम 2017 एंड उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हो. You can either write dash or not, because anything that starts from 2017 means the date is starting from 2017 year. So इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप? Select name, comma issue date from DVD where issue date like quotes 2017% quote. Very easy question. Moving on to next one. Now focus on question number 5. We have to write outputs. Just write minimum of issue date. Issue date minimum means the oldest date, which is the second one. So just write min issue date and 2016 12/13 the answer. Distinct D type. So distinct D type means different D types. So there are folk, classical and rock. Only 3 values will be there. So answer is folk, classical, rock. 7th question. D.decode name D title. So D.decode the name and D title. There are 3 columns that we have to print. So table join हो गया and D and M are again aliases. D code दोनों का match कर रहे हैं and we are just printing the answers. So सबसे पहले आपका F101 and we are joining these two tables about D code.
सो लेट्स मेक श्योर कि दोनों के अंदर डी कोड सेम है. एंड एज यू कैन सी हियर, there are only 3 D codes: R102, F102, C101, and here are more than 3. So just make sure that whenever you are writing the output, दोनों के अंदर D code same हो. So जो रिजल्ट आपके पास आएगा उसके अंदर सिर्फ यही 3 D codes होंगे, बिकॉज R102 ये रहा, F102 ये रहा एंड C101 ये रहा. ये दोनों रोज आपके नहीं आएंगे. ओके, सो नंबर 1 is D code C101, D title the planets, and the name is Agam Singh. Next row, F102 is the D code, Universal Soldier is the D title, the name is Earth Joseph, and so on. And in this question we noticed that जब आपको दोनों के अंदर D code मैच करना था, there were some entries which were not present in the second table, so make sure आप इनको आउटपुट में ना लिखो. Very important one. Now last one is select D title from DVD. So D title ये रहा आपके सामने DVD where D type not in folk और classical. Very easy. आपको सिर्फ और सिर्फ D title print करना है. जहाँ पर D type folk और classical नहीं है, it means ये तीनों चारों नहीं आएंगे. Answer will be a day in life. Now moving on to next question, there are again 2 tables: salesperson, item, and you have to display the code and name of all salesperson having 17 item type code from the table salesperson. So item type code is given in the table salesperson. This is the IT code, and you have to, okay, this was not 17, it is I7, so you have to just print the code and name of those rows, those records from salesperson whose IT code is I7. So you will write select code comma name from salesperson where IT code is equal to I7, and I7 का data type, make sure you don't mistake it. Since there is I in it, this must be a string data type, and string data type is always written inside single or double quotes. Next one is to display all details. It means to select star from table salesperson in descending order of salary. Very easy question. Select star from salesperson order by salary DESC. Third one, display the number of salesperson. So number of, it means you have to count something, and for counting the function that you use is count star or the count और ब्रैकेट में आपका कॉलम का नेम. So we will be using count star, and in each type, so each type means you have to group it about type. Let's see where the type is, type of item, and here it is given as IT code for the same. So we have to group the table about IT code, and उसके बाद you have to just count it. So you can simply write select count star from salesperson group by IT code. बट इस क्वेरी के अंदर एक छोटा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जब आपके पास आंसर आएगा, आंसर के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉलम के अंदर काउंटिंग लिखी होगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने आंसर आता है काउंट स्टार, सो यू विल जस्ट सी काउंट स्टार, एंड यहाँ पर आपको सेल्स पर्सन इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी, ये नहीं पता चलेगा कि किस IT कोड के सामने काउंटिंग हुई है. इट मीन्स किस IT कोड का कितना काउंट है. सो फॉर दैट पर्पस इट इज ऑलवेज एडवाइज टू प्रिंट दैट कॉलम अबाउट विच यू आर ग्रुपिंग एज वेल. मतलब जिस कॉलम के अबाउट आप ग्रुपिंग कर रहे हो उसको भी आप टेबल के आउटपुट के अंदर प्रिंट करा दो. सो जस्ट राइट सेलेक्ट काउंट स्टार कोमा IT कोड, क्योंकि आप IT कोड के अबाउट क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे फ्रॉम सेल्स पर्सन ग्रुप बाय IT कोड. तो इससे आपको पता चलेगा कि किस IT कोड का काउंट कितना है. इट इज मच मोर मीनिंगफुल. इंस्टेड कि आप सीधे काउंट स्टार प्रिंट कराओ, उससे क्या होगा, सिर्फ आपके सामने कुछ नंबर्स आएंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि किसके कोरस्पॉन्डिंग नंबर्स हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट query, to display name of all salesperson from the salesperson table along with their corresponding item type from the item table. So you have to combine these two tables, name of the salesperson and item type from the item table. अब इन दोनों को join कैसे किया जाए? Look for a common column which is IT code here, IT code here. So आप इन दोनों के about इसको join कर सकते हो, and उसके बाद you just have to
print the details. So for that, just write select salesperson, just write select name, comma, item type from salesperson, comma, item, where salesperson.it code is equal to item.it code. इससे क्या होगा, हमने एक इक्वालिटी कंडीशन लगा दी जिससे कि दोनों टेबल कंबाइन हो जाएंगी एंड जहां पर भी आपका आईटी कोड मैच करेगा उसका डेटा आपके सामने प्रिंट हो जाएगा। जैसे I2 के अंदर आइटम टाइप आपका बेकरी आएगा, मतलब तनदीप जहां जिसका आईटी कोड I2 है, आईटी कोड प्रिंट नहीं होगा, सामने क्या प्रिंट होगा, आइटम टाइप विच इज बेकरी। आफ्टर दैट योगराज सिन्हा आईटी कोड इज I5, इसके अबाउट कंपेयर करेंगे जहां पर दोनों वैल्यूज मैच कर गई, आइटम टाइप आपका प्रिंट हो जाएगा विच इज स्टेशनरी। I2 इसके अंदर अगेन बेकरी, I7 this one, and I7 again the same thing. Moving on to the next question. The next question is you have to write the outputs of the query. So select max salary, easy one, हम इसको दोबारा नहीं करेंगे। इसके अंदर आप मैक्सिमम या फिर मैक्सिमम सैलरी प्रिंट कराएंगे। डिस्टिंक्ट आईटी कोड, इसके अंदर आपको अलग अलग आईटी कोड्स प्रिंट कराने हैं। सिलेक्ट कोड नेम विच मीन्स आपका कोड ये आ गया, नेम ये आ गया, आईटी कोड विच इज हियर और यहाँ पर भी है। फ्रॉम सेल्स पर्सन एस आइटम आई, वहां जहाँ पे दोनों की वैल्यूज मैच करेगी एंड टर्नओवर ग्रेटर देन 7 लाख एंड एज यू कैन सी सभी का टर्नओवर 7 लाख से ज्यादा है तो आंसर उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं आंसर क्या है। सिलेक्ट सम ऑफ सैलरी फ्रॉम सेल्स पर्सन वेयर आईटी कोड इज I2। सो सेल्स पर्सन के अंदर आईटी कोड के आपको सम को प्रिंट कराना है, ये भी हम कर चुके हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन देयर आर टू टेबल्स and you have to display all details from member in descending order. Just write select star from member order by issue date descending. Very easy question, कई बार आ चुका है। Display B number, B name of all fiction type books from the table book. So table आपकी book है, type आपका fiction हो गया and you have to print B number and B name. So B name here and B number is, it means code from the table book. So just write select code comma B name from book where type is equal to fiction. ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, डिस्प्ले टाइप एंड नंबर ऑफ बुक्स इन ईच टाइप। अगेन जहां पर भी ईच लिखा होगा मतलब हमको ग्रुपिंग करनी पड़ेगी एंड काउंट करना पड़ेगा, टाइप भी प्रिंट करना पड़ेगा। सो वी विल जस्ट राइट सेलेक्ट टाइप comma count star from books grouped by type. Easy question. Moving on to the next one. To display all M name and issue date of those members from table member were book issued, that is issue date in the year 2017. ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये आप इसका आंसर देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। आई विल नॉट एक्सप्लेन इट अगेन, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज आउटपुट मैक्स इशू डेट। आप लिख सकते हैं मैक्स इशू डेट कौन सी होगी, दिस वन। डिस्टिंक्ट टाइप, अगेन रिपीट, इसके अंदर आपको वही दोनों टेबल को ज्वाइन करना है, रिपीट क्वेश्चन है एंड ये भी रिपीट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हम 2 या 3 बार कर चुके हैं। प्लीज वीडियो को बैक करके आप दोबारा देखिए एंड ट्राई टू सॉल्व देम ऑन योर ओन। नाउ मूविंग ऑन टू द board examination question paper of 2017-2018, as you can see again there are again 2 tables, account and transact, and we have similar questions. For example, display details of all transaction, it means we have to print everything of type deposit and type हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा from table transact. So just write select star from transact where type is equal to deposit. Next, display the A number, so we have to just print A number and amount, these 2 columns of all deposit, which means type should be deposit, and withdrawals done in the month of October 2017 from table transact. It means we have to print the details and especially A number and amount of all the deposit and withdrawals done in the month of October 2017. Now the date could be anything but the month and year is fixed. We can write select A number comma amount from transact where DOT like and इसके बाद आप सिंपली लिख सकते हैं 2017-10-%। इसमें क्या होगा,
आपका ईयर और आपका मंथ हमने फिक्स कर दिया है एंड उसके बाद कोई भी डेट आ सकती है. इट इज अगेन इजी क्वेश्चन. Moving on to next one. To display last date of transaction from the table, last date means the latest date, and it should have a number as 103. So basically we are talking about max of DOT. So max of DOT आप यहाँ पर लिखेंगे select max DOT, and additional condition is having a number as 103. So write select max DOT from transact where a number is equal to 103. प्लीज इस हैविंग को देखकर आप कंफ्यूज ना हो जाना. वेयर की जगह पर हैविंग नहीं लगाना. हैविंग सिर्फ तभी लगता है, हैविंग क्लॉज की बात कर रहा हूँ, जब आपका ग्रुपिंग होती है. ग्रुप्स को फिल्टर आउट करने के लिए हैविंग क्लॉज यूज होता है. ये हैविंग से तो आपको समझना है कि आपको वेयर क्लॉज लगाना है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Display a number, a name, DOT. So a number, a name, DOT. So these three columns of those persons who from table account and transact, again you have to join them, who have done transactions less than or equal to 3000. So जिनका अमाउंट ट्रांजेक्शन का 3000 से कम है, इसके लिए आप क्या करेंगे? अगेन वी हैव टू ज्वाइन दीज टू टेबल्स. ज्वाइन करने के लिए आपके पास कोई कॉमन कॉलम होना चाहिए. क्या इन दोनों में कोई कॉमन कॉलम है? आंसर इज यस, ए नंबर. सो राइट सेलेक्ट a number, a name, DOT from account, transact where. Now the join condition, account dot a number is equal to transact dot a number and amount is less than equal to 3000. Now in the next query we have to write the output. So select a number, a name from account where the address not in Chennai or Bangalore. You can simply see कि जहाँ पर एड्रेस चेन्नई बैंगलोर नहीं होगा, मतलब ये दोनों नहीं आएंगे, ये भी नहीं आएगा. एंड उसका क्या प्रिंट कराना है? ए नंबर, ए नेम. सो ए नंबर एंड ए नेम ओनली. सो आपके पास आएगा 103 अली रेजा एंड 105 सिमरन कौर. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेलेक्ट distinct a number from transact. Again repeat question. Next one, select a number comma count star. So a number count star, it means count everything. Min of amount matlab minimum of amount. From transact group by a number having count star greater than 1. अगेन अब आपको टेबल कौन सी पिक करनी है? ट्रांसैक्ट. किसके अबाउट ग्रुपिंग होगी? ए नंबर के अबाउट. कितने ग्रुप्स बनेंगे? 101 का एक ग्रुप, 102 का दूसरा, 103 का तीसरा ग्रुप. एंड अगेन काउंट शुड बी ग्रेटर देन 1. सो ये एक ग्रुप नहीं बनेगा. बेसिकली सिर्फ दो ग्रुप्स बनेंगे, 101 एंड 103. उसके अंदर आपको दोनों ग्रुप्स के अंदर एक तो ए नंबर प्रिंट करना है, काउंटिंग करनी है. काउंट स्टार में दोनों ग्रुप्स के आंसर आएंगे 22. मिन अमाउंट, तो 101 के अंदर मिन अमाउंट इज 2500. इन दोनों में से 2500 इज द मिनिमम. एंड 103 के अंदर 1000 रुपीज इज द मिनिमम. सो ये उसके अंदर आ जाएगा. काउंट तो दोनों का 2 है. सो इस तरीके से इसका आउटपुट ये रहा. Select count star comma sum of amount from transact where DOT less than equal to. अगेन सेम क्वेश्चन है. आपको पूरी टेबल का, अब इसके अंदर आपने ग्रुपिंग नहीं की तो पूरी टेबल पे आपको काउंट स्टार लगाना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा. बट सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड्स की बात करनी है आपको जिसके अंदर डेट ऑफ ट्रांजेक्शन DOT इज लेस देन दिस. उससे डेट कम है. और डेट कम होने का मतलब क्या हुआ? उसके पहले की बात हो रही है. तो 2017, 1 जून 2017 से पहले की जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी इन्वॉल्विंग इंक्लूडिंग दिस डेट, आपको उनका काउंट करना है और सम करना है. तो काउंट कर लेते हैं. तो टेबल आपकी ट्रांसेक्ट है, इस कॉलम की तरफ आप देखिए. एंड 1 जून 2017, क्या 21 दिसंबर 1 जून से पहले आएगा? नहीं. 1 जून ये रहा. 12 मई करेक्ट, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा. तो आपके पास बेसिकली 2 रोज आ गए. तो काउंट स्टार विल बी 2. सम ऑफ अमाउंट विच इज 3 + 2 5000. सो ये आपका आंसर आएगा. आप इसके अंदर टेबल के आउटपुट अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं. ऐसे आएगा आंसर. सो यू कैन सी देयर आर 2 टेबल्स. Number 1 is trains, number 2 is passengers, and we have to again solve these questions. We have to write queries and outputs both. So to display details of all trains which start from New Delhi. So details of all trains, it means we have to print everything. Select star from trains where start is equal to New Delhi. This is the query. Next one, to display PNR, PName, gender and age of all passengers whose age is below 50. You just write select PNR, PName, gender
comma age from passengers where age is less than 50. Very easy question. Display total number of male and female passengers. Again, you have to first of all categorize or the group the table about the gender. You will get two groups. Number one is male, number two is female, and you will have to write their count. So you will write select gender, comma count star from passengers group by gender. Next question. Question number 4. To display details of all passengers traveling in trains whose T number is 12015. So all those details, it means you have to print everything from passenger where T number is 12015. So very easy question, you can do it yourself. Question number 5. Select max of travel date, min of travel date. We have done the similar questions. So आपको max और min travel date print करनी है from passengers where gender is equal to female. This is the answer. Select end count star from trains. So we are talking about trains table. You have to first of all print end, then count star from trains. You have to group by end. It means you have to make groups. First group would be of Ahmedabad junction. Next group will be of Ajmer junction, हबीबगंज, अमृतसर. ये कोई ग्रुप नहीं बनाएगा क्योंकि पहले आ चुका है. न्यू दिल्ली एक ग्रुप बन गया. अमृतसर नहीं बनाएगा ग्रुप, ऑलरेडी इंक्लूडेड. ये ग्रुप बनेगा. अब न्यू दिल्ली पहले ग्रुप बन चुके हैं. तो बेसिकली वी हैव 1 2 3 4 5 6. वी हैव 6 ग्रुप्स एंड उसके अंदर हमको सिर्फ वही ग्रुप्स का डेटा प्रिंट करना है विच हैव काउंट स्टार ग्रेटर देन 1. सो देख लेते हैं. अहमदाबाद जंक्शन के अंदर सिर्फ एक ही एंट्री है तो ये ग्रुप नहीं बनेगा. अजमेर के अंदर भी एक ही एंट्री है, ये भी ग्रुप नहीं बनेगा. अमृतसर के अंदर 1 एंट्री 2 एंट्रीज, तो अमृतसर एक ग्रुप बनेगा. हबीबगंज एक एंट्री ये रही, एक ये रही, एक ग्रुप ये बन गया. सो आउटपुट विल बी ऑन योर स्क्रीन, प्लीज चेक इट आउट. एज यू हैव सीन, ऐसे ग्रुप्स जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 से ज्यादा है वो था हबीबगंज, अमृतसर, न्यू दिल्ली. सो ओनली 3 ग्रुप्स. सो काउंट और सभी का काउंट आपको दिख जाएगा. अमृतसर का काउंट 2, हबीबगंज का 2, न्यू दिल्ली का 4. एंड उसके अंदर आपको एंड जो भी था वो ग्रुप का नाम है लिखना है. 7th पार्ट. सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ट्रेवल डेट. आप कर सकते हैं, इजी है. सेलेक्ट टी नेम, पी नेम फ्रॉम ट्रेन पैसेंजर. दीज एंट्रीज आर मैचिंग. एज बिटवीन 50 एंड 60. चलो इस क्वेश्चन को करके देखते हैं. वेयर एज इज बिटवीन 50 एंड 60. Let's see where is the column of age. 50 and 60 के बीच में कौन कौन सी एजेस हैं? 1 2. Only these two ages. एंड इन दोनों का हमें किसके अबाउट कंपेयर करना है? टी नंबर. सो इनका टी नंबर है आपका 13005 12030. क्या दूसरी टेबल के अंदर ये टी नंबर है? 13005 12030. यस करेक्ट, देयर आर ट्रेन्स अवेलेबल. एंड आपको क्या प्रिंट करना है? टी नेम. सो टी नेम आपको यहाँ से मिलेगा. पी नेम आपको यहाँ से मिलेगा. एंड ओनली दीज टू थिंग्स. सो यू कैन सिंपली राइट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेन्स. तो पहले ट्रेन्स टेबल को देख लीजिए. एंड यहाँ पर सबसे पहले आपका आएगा 13005, पैसेंजर नेम इज NS सिंह. देन 12030, पैसेंजर नेम इज R शर्मा. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Now this is very easy question. It says यहाँ पर एक आपके पास टेबल है एंड बताइए S नंबर, नेम एंड प्राइस में से which can be considered as primary key. So obviously S number is the best column for primary key. Why? Because all the values are unique and different. Now we have one similar question as we just discussed. It just has some different values. as चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं. Display number of male and female passengers. We just did. Trains which start from Pune junction. So उसके अंदर वैल्यूज थोड़ी चेंज थी. वहाँ पर एंड था, यहाँ पर स्टार्ट है. तो ये क्वेश्चन भी सेम है. इसके अंदर पैसेंजर जिनकी एज 50+ है, तो आप इन क्वेरीज को खुद से कर सकते हो. बाकी आपकी स्क्रीन पर भी आंसर देख रहे होंगे आप. डिस्टिंक्ट ट्रैवल डेट, मिन ट्रैवल डेट, मैक्स ट्रैवल डेट, जेंडर इक्वल टू मेल, ये सब वैल्यूज़ आप खुद से कर सकते हो. बेसिकली ये क्वेश्चन बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर है क्योंकि ये क्वेश्चन सेम ईयर के अंदर दूसरे सेट में आया था. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द CBSE बोर्ड एग्जाम 1920
And the first question is, which SQL command is used to add a new attribute in a table? So the answer is alter table command. Which SQL aggregate function is used to count all records of a table? जब all records की बात आ रही है तो you write count star, and अगर not non null records की बात होती then write count function. Now we have count star function. Which clause is used with select command is equal to display the records in ascending order of an attribute? Write order by. Full forms of DDL, DML. DDL stands for data definition language. DML stands for data manipulation language. अब ये दो टेबल्स आपके पास हैं. ये बोलता है डिग्री ऑफ एम्प्लॉय क्या होगी. डिग्री मतलब नंबर ऑफ कॉलम विच इज 4. व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ डिपार्टमेंट. ध्यान देना, आप कई बार बच्चे जल्दी में यही कार्डिनलिटी एम्प्लॉय टेबल का लिख देंगे विच इज रॉन्ग. कार्डिनलिटी ऑफ डिपार्टमेंट पूछा है तो 1 2 3, आंसर इज 3. व्हाट इज अ प्राइमरी की. नाउ यहाँ पे डेफिनेशन है, आपको स्क्रीन के ऊपर डेफिनेशन दिख रही होगी. प्लीज इसको आप पढ़ लो और अच्छे से इसको मेमोराइज कर लेना. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट टेबल, यहाँ पर दो टेबल्स आपको दी हुई हैं एंड आपको इसके अंदर बेसिकली आउटपुट्स बताने हैं. तो सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट सिटीज फ्रॉम कस्टमर्स. कस्टमर्स के अंदर डिस्टिंक्ट सिटीज आपको काउंट करनी है. डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग. सो 1 2 3 4 5. So the answer is 5. Max PUR underscore date, purchase date. तो max मतलब latest one. जैसे कि आज तक की हिस्ट्री में सबसे मैक्सिमम डेट इज आज की डेट. सो और मिनिमम डेट इज जो सबसे पहली डेट थी. तो इस टेबल के अंदर मैक्स डेट कौन सी होगी. तो आप देखिए सबसे बड़ी डेट कौन सी है, सबसे लेटेस्ट डेट कौन सी है, रीसेंट वन. क्या ये है 9/5/2019? Answer is yes. The max date is 2019-05-09. Next one is select CNAME, quantity, purchase date from customers, purchases. मतलब दोनों टेबल्स को अगेन ज्वाइन कर दिया गया है जहां पर सी नंबर दोनों के बराबर है एंड क्वांटिटी इन 10 20, मतलब 10 या 20 में क्वांटिटी होनी चाहिए. तो दोनों को पहले अंडरलाइन कर लेते हैं. 10 10 20. तो बेसिकली 3 ही रोज की बात हो रही है. ओके, नाउ हमें क्या क्या प्रिंट करना है. पहले हम जॉइंट कंडीशन भी चेक कर लेते हैं. क्या दोनों का सी नंबर बराबर है. सी नंबर मतलब C3 C6 C1 C1 C3 C6. ओके, दोनों टेबल्स के अंदर ये तीनों चीज़ें भी हैं. एंड अब बस हमको सी नेम, क्वांटिटी एंड परचेज डेट प्रिंट करना है. तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे. आप देखेंगे फ्रॉम स्टेटमेंट के अंदर पहले कौन सी टेबल लिखी है, कस्टमर्स लिखा है. तो सिंपली राइट C1. C1 के बाद उसके कॉरस्पॉन्डिंग सी नेम विच इज संयम एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी आपको मिलेगी यहाँ से 10. उसके बाद आपका आता है C3. C3 में मेहर एंड कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी आपको मिलेगी 20. C6 राहुल एंड 10. इस तरीके से आप इसके क्वेश्चन के आंसर लिख सकते थे. इट इज ऑफ 3 मार्क्स एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ इसके अंदर आपको आउटपुट्स लिखने हैं. सेम टेबल्स इन्होंने यूज की गई है एंड आपको इसके अंदर आउटपुट लिखने हैं. तो देखिए इसको. सो टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ ऑल, अगेन ऑल डिटेल्स मतलब स्टार कस्टमर्स हु सिटीज आर नीदर दिल्ली नॉर मुंबई. अब यहाँ पे नीदर नॉर लिखा है तो आप या तो नॉट इन का यूज कर सकते हैं या फिर नॉट इक्वल का यूज कर सकते हैं. हम इसको प्रेफर करेंगे. तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर cities not in round bracket Delhi, Mumbai. Next one is to display C name and cities of all customers. So C name, cities of all customers in ascending order of C name. So simple है. Select C name, cities from customers, order by C name. That's it. Third part. ये तो क्वेश्चन काफी आसान है. To display the number of customers along with their respective cities in each of the city. अब यहां पर आप एक वर्ड को ध्यान से देखिए, respective cities in each of the cities. Number of customers मतलब आपको हर सिटी को ग्रुप करके काउंटिंग करनी है. मतलब
इसमें लिखा इन ईच ऑफ द सिटी नंबर ऑफ कस्टमर को काउंट करना है। सो बेसिकली आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे सिलेक्ट सिटीज कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स ग्रुप बाय cities. Simple. Last one, to display details of all purchase whose quantity is more than 15. So very easy question. Select star from purchases where quantity is greater than 15. Very easy question. So moving on to the next question, you can see यहाँ पर भी दो tables है, एक employees एक department. आपको employees की डिग्री बतानी है and कार्डिनलिटी बतानी डिपार्टमेंट की, तो आप इसको खुद से करना सॉल्व। ये वाला क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो डोंट फोकस ऑन दिस वन। नेक्स्ट वन, एज यू कैन सी देयर आर अगेन टू टेबल्स, कस्टमर्स एंड परचेजेस। You have to display details of all customers whose cities are neither Delhi nor Mumbai. Again, not in operator का यूज होगा। C name cities of all customers in ascending order of C name. Very easy question. You have to write cities and C name etc. कर लेंगे आप इसको, आसान क्वेश्चन है। नंबर ऑफ कस्टमर्स अलॉन्ग विद देयर रिस्पेक्टिव सिटीज इन ईच ऑफ द सिटीज, ये भी क्वेश्चन कर चुके हैं। डिटेल्स ऑफ ऑल परचेजेस मेड इन ईयर 2019। अगेन आप लाइक ऑपरेटर का यूज करेंगे, वेयर परचेज अंडरस्कोर डेट लाइक कोट्स 2019 परसेंटेज कोट्स। काउंट डिस्टिंक्ट सिटीज कर सकते हैं आप काउंट। मैक्स परचेज डेट फ्रॉम परचेजेस वेयर क्वांटिटी लेस देन 10, तो क्वांटिटी लेस देन 10 को पहले हाईलाइट कर लेना, which is 7, 5, 8, 6। तो आपने इसको सिलेक्ट कर लिया एंड इनके अंदर मैक्स परचेज डेट कौन सी है, मतलब आप इन चार डेट्स को देखना एंड मैक्सिमम कौन सी होगी। ऑब्वियसली 2019 के अंदर ये वाली डेट मैक्सिमम होगी, तो इसका आंसर स्क्रीन पर ये रहा। सिलेक्ट सिटीज फ्रॉम कस्टमर्स, वेरी सिंपल क्वेरी। आपको कस्टमर्स टेबल में सिर्फ सिटीज प्रिंट करानी है, बट ग्रुप बाय सिटीज हैविंग काउंट स्टार इज इक्वल टू 2। ग्रुपिंग करने के बाद और जिसका काउंट 2 है सिर्फ वही सिटीज प्रिंट करानी है, तो इट मींस वही सिटीज जिनका काउंट 2 है, जैसे कि दिल्ली का नहीं है 1 2 3 नहीं था, मुंबई 1 2, चेन्नई 1 2, इंदौर का भी नहीं है, बैंगलोर का भी नहीं है। सो आपको सिर्फ पहले प्रिंट करना पड़ेगा मुंबई फिर चेन्नई, जो पहले आता है उसको पहले प्रिंट किया जाता है। सिलेक्ट सी नेम क्वांटिटी परचेज डेट फ्रॉम कस्टमर्स परचेजेस वेयर कस्टमर, ये दोनों आईडीज बराबर हैं, क्वांटिटी इन 10,20। इट मींस क्वांटिटी 10 या 20 होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। मूविंग ऑन टू द सेशन 2021, क्वेश्चन नंबर 1 इज इन सीक्वल राइट द नेम ऑफ एग्रीगेट फंक्शन विच विल डिस्प्ले द कार्डिनलिटी ऑफ अ टेबल। नाउ कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ रोज, कौन सा फंक्शन नंबर ऑफ रोज को काउंट करेगा, तो देयर आर बेसिकली टू ऑप्शंस, काउंट एंड काउंट स्टार। बट बेसिकली काउंट क्या करता है, ये नॉन नल वैल्यूज को ही काउंट करेगा, बट काउंट स्टार काउंट्स ऑल द रोज। सो कार्डिनलिटी आपका काउंट स्टार ही देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉज इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू यूज टू सिलेक्ट मैचिंग टपल्स इन अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ वैल्यूज, मतलब रेंज ऑफ वैल्यूज के अंदर कौन सा आपका ऑपरेटर यूज किया जाता है। तो बेसिकली इन आपको डिस्टिंक्ट वैल्यूज देगा, लाइक पैटर्न मैच करेगा। इज यूज होता है नल वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए। तो रेंज ऑफ वैल्यूज की जब बात आती है तो बिटवीन आप यूज करते हो, क्यों, क्योंकि जब भी आपने वेयर के अंदर बिटवीन यूज किया होगा तो आपने लिखा होगा बिटवीन 10 एंड 20। तो ये इस रेंज ऑफ वैल्यूज के अंदर कहां से कहां तक, 11 से 19 की वैल्यूज तक इस रेंज के अंदर काम करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डेटा टाइप इन एसक्यूएल। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने डेट डेटा टाइप भी देखा है, डेसिमल भी देखा था, मैंने बताया था कि इसको माइंड में रखना। कैर भी देखा है। कौन सा डेटा टाइप हमने नहीं देखा, विच इज स्ट्रिंग। हाँ, हमने स्ट्रिंग एक डेटा टाइप पढ़ा था जिसका इंप्लीमेंटेशन आप कैर और वेर कैर का यूज करके करते हो, बट स्ट्रिंग इटसेल्फ इज नॉट अ डेटा टाइप, सो आंसर इज स्ट्रिंग। Which of the following is not a DML command? DML stands for data manipulation language. DML data manipulation language, जिसके अंदर आपने 4 कमांड्स पढ़ी थी, select, insert, delete, update. So insert is a DML command, update is a DML command, delete again is a DML command, alter is a DDL command. And DDL commands और कौन कौन सी होती हैं, create, alter and drop. Moving on to the next question. Question number 18. Which of the following commands in SQL is used to add a new record
न्यू रिकॉर्ड मतलब एक नया रो किससे ऐड होता है? आंसर इज इंसर्ट, क्योंकि इंसर्ट इनटू टेबल का नाम आप लिखते थे, फिर आप कॉलम के नेम लिखते थे, वैल्यूज लिखते थे, ये इंसर्ट करता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ डीएमएल? सो डीएमएल जस्ट डिस्कस्ड इज data manipulation language. Moving on to the next question. As you can see there is one table pharma जिसके अंदर सभी कॉलम के डेटा टाइप्स आपको दिए हुए हैं एंड नीचे सिर्फ इतना पूछा है डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ टेबल फार्मा बताओ। तो ये क्वेश्चन तो हमने कई बार कर लिया डिस्कस, इसका आंसर आपको पता ही होगा। डिग्री इज 5 एंड कार्डिनलिटी इज 6। विच एट्रीब्यूट इज बेस्ट सुटेबल फॉर प्राइमरी की? It is very obvious that the column which is most suitable to be declared as a primary key is MID. Why? Because it has unique values, it has non-null values, and it cannot be duplicate. Now moving on to the next question. As you can see, Anmol has received a new medicine to be added into his stock, but for which he does not know the number of units. So he decides to add the medicine without its values. So आपके पास ये टेबल है और आपको ये वैल्यूज इंसर्ट करनी है और इसके अंदर एक चीज मिसिंग है। तो सिंपली क्वेरी क्या होगी? इंसर्ट कमांड आपको लिखनी पड़ेगी, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम विच इज फार्मा, एंड यहाँ पर आप सभी कॉलम के नाम लिखना, MID, M नेम, प्राइस, एक्सपायरी, फिर वैल्यूज, एंड वैल्यूज के अंदर आपको लिखना पड़ेगा M7 सुक्रलफेट, 17, स्ट्रिंग के अंदर 2022 0320। दैट्स इट। सो ये क्या करेगा? यूनिट्स की वैल्यू आपके पास नहीं है, उसकी जगह पर क्या इंसर्ट कर देगा? नल। एंड यही तरीका आपको फॉलो करना है कोई भी वैल्यू इंसर्ट करने के लिए, चाहे आपके पास सभी कॉलम की वैल्यूज हो या ना हो, सो दैट यू विल नॉट बी कंफ्यूज्ड। अनमोल वांट्स टू चेंज द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट यूनिट्स टू क्वांटिटी। अभी जब आपको किसी कॉलम का नाम चेंज करना है तो फिर हमेशा जो कमांड यूज होती थी ऑल्टर टेबल। क्रिएट टेबल तो टेबल क्रिएट करेगी, ड्रॉप टेबल उसको ड्रॉप कर देगी, अपडेट किसी वैल्यू को अपडेट करेगा। सो यू कैन ऑल्सो सॉल्व दिस यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड, बट द आंसर इज ऑल्टर टेबल। अब अगर आपको किसी कॉलम की वैल्यू बढ़ानी होती है, अगर किसी रिकॉर्ड की वैल्यू बढ़ानी होती है, तो कौन सी कमांड यूज करते हैं हम करते हैं अपडेट सेट। आप लिखते थे अपडेट टेबल का नाम, सेट कॉलम का नाम इक्वल टू न्यू वैल्यू सेमीकोलन। इंसर्ट इनटू गलत है क्योंकि वैल्यू इंसर्ट करने के काम आती है। ऑल्टर टेबल आपकी DDL कमांड है, डेटा डेफिनेशन। आपको एक नया कॉलम ऐड नहीं करना है, आपको एग्जिस्टिंग कॉलम के अंदर वैल्यूज को बढ़ाना है। सो द आंसर इज अपडेट सेट। नाउ व्हाट आर टपल्स इन SQL टेबल? टपल्स आर नथिंग बट रोज। राइट अ सुटेबल एग्जांपल विद द SQL टेबल टू इलस्ट्रेट योर आंसर। इसके अंदर आप यही टेबल ड्रॉ कर सकते हैं एंड इसके अंदर दीज आर द टपल्स। ट्राई कीजिए कि जब भी आपको एग्जाम्पल देने हो तो आप पेपर से ही क्वेश्चन का एग्जाम्पल उठा लो, दैट वुड बी अ लिटिल हेल्पफुल। क्वेश्चन 31। नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम लास्ट चैप्टर इंटरफेसिंग। अभी तक हमने एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं किया क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस 2019 से ही आने शुरू हुए थे, उसके पहले ऐसा चैप्टर बुक के अंदर नहीं था। ओके, सो आपके पास एक टेबल है पैसेंजर्स, डेटाबेस का नाम है ट्रैवल। ये टेबल आपके पास है। एक कर्सर आपने क्रिएट किया जिसका नाम है CUR। हमको याद है कर्सर क्या है? एक ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर है विच इज यूज्ड टू होल्ड रिजल्ट सेट, जिसको आप रो बाय रो ट्रैवर्स करते थे, अगर आपको वीडियो याद हो तो। राइट द आउटपुट ऑफ एग्जीक्यूशन। आपको सिर्फ आउटपुट लिखना है, तो कोई बात नहीं, अब हम सीधे लिखेंगे इसका आउटपुट। तो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, ये क्वेरी एग्जीक्यूट हुई। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पैसेंजर्स। ओके, हमने क्या किया? पैसेंजर टेबल से सब कुछ फेच कर लिया। फेच ऑल मतलब सारा डेटा हमने फेच किया। फिर हम ट्रैवर्स करेंगे RECS को, एंड जब भी हम इसको फेच करेंगे तो आपके पास एक टपल आएगा। टपल के अंदर T नंबर, नेम, ये सब वैल्यूज आपकी अपने रिस्पेक्टिव डेटा टाइप्स के अंदर होंगी। तो अगर आप इस टेबल को देखो तो इसके अंदर कुछ इस तरीके से वैल्यूज पड़ी होंगी। तो जब हम इसको ट्रैवर्स करेंगे, सबसे पहले R के पास क्या आएगा? सबसे पहले R के पास आएगा
एक टपल जिसके अंदर लिखा होगा T1 इनसाइड स्ट्रिंग, फिर लिखा होगा रवि कुमार अगेन इनसाइड स्ट्रिंग, अगेन दिल्ली, इसके अंदर कोई भी नंबर आपको इंटीजर नहीं मिल रहा है, एंड फिर मुंबई। और ये वैल्यू किसके पास आएगी? ये वैल्यू आएगी R के पास। अभी जब आप R(1) प्रिंट करोगे तो हमको पता है टपल के अंदर इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0, तो 1 मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द नेम। सो जब ये लूप चलेगा हर बार इसके पास 1 by 1 रोज आएंगे। सबसे पहली बार इसके पास फर्स्ट रो आया, इसने क्या प्रिंट करेगा? हमारा आउटपुट विल बी नंबर 1 रवि कुमार। जब लूप दोबारा चलेगा इसके पास दूसरा रो आएगा, बिल्कुल सिमिलर तरीके से आपको क्या लिखना है? निशांत जैन। जब थर्ड टाइम चलेगा तो दीपक प्रकाश। सो इस तरीके से आपको इसके अंदर आउटपुट लिखने हैं। ऑल्दो इस सेशन से ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, इस सेशन से आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर आपको इंटरफेसिंग का क्वेश्चन मिलेगा एंड आपको उसके अंदर fill in the blanks करने होंगे, but still it's good to know how to write the answer. Moving on to the next question. Names of two constraints and their respective uses in SQL. Constraint क्या होता है? जो आपको डेटा एंट्री करने पर कुछ बाउंडेशंस, लिमिटेशंस लगा देता है, जैसे कि यूनिक, प्राइमरी की, नॉट नल, चेक एक्सेट्रा। ये चीज़ आप अगेन वीडियो में जाके रिवाइज कर सकते हो एंड इनका यूज़ क्या है वो भी उसके अंदर लिखा हुआ है। बाकी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Moving on to the next question, again you have two relations. Relation मतलब टेबल, टेबल का नाम कस्टमर एंड ट्रांजेक्शन दिया हुआ है। दोनों टेबल्स को आपने देखा एंड वी हैव टू राइट आउटपुट्स। सो मैक्स बैलेंस, मिन बैलेंस फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर टेबल को देखो, बैलेंस का मैक्सिमम क्या होगा? आप देख सकते हो 22,000 इज द मैक्स बैलेंस, मिन बैलेंस इज 9750, फिर जेंडर इज M। अगेन ये दोनों तो आपके फीमेल्स के थे। अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बेसिकली मेल्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा एंड इसके अंदर मैक्स बैलेंस इज 15,000 एंड मिन बैलेंस इज 12,500। तो आंसर विल बी दिस। सेलेक्ट सम ऑफ अमाउंट कॉमा टाइप फ्रॉम ट्रांजैक्शन ग्रुप बाय टाइप। नाउ ट्रांजैक्शन टेबल के अंदर टाइप के अबाउट आपको क्या करना है? सम कैलकुलेट करना है। तो पहले ग्रुप बना देते हैं। एक ग्रुप होगा डेबिट का और एक होगा क्रेडिट का। तो जो डेबिट का ग्रुप होगा उसके अंदर एक ही एलिमेंट है तो इसका सम 1000 ही आएगा, और इनके अंदर क्योंकि दो एलिमेंट्स हैं इसका सम आएगा 3500। सो तो रिजल्ट वुड बी एक सिंगल कॉलम जिसके अंदर सम अमाउंट लिखा होगा ऊपर एंड दूसरे पे लिखा होगा टाइप एंड रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ फोकस ऑन द लास्ट क्वेश्चन, द नेम, टी डेट, अमाउंट। हम दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हैं, नेम एंड टी डेट एंड अमाउंट। हमको इन तीनों कॉलम्स को प्रिंट कराना है वेयर टाइप इज क्रेडिट। सो एंड इनको ज्वाइन करेंगे AC नंबर के अबाउट। तो AC नंबर हमारे पास C1, C5, C3, C1, C5, C3। तो बेसिकली अब आप इसके अंदर भी देख पा रहे होंगे कि हमारा ये दोनों कॉलम ये आंसर में नहीं आएंगे क्योंकि आपके C1, C3, C5 ही फाइनल आंसर में आएंगे। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जिसके अंदर आपको पता चला कि आपको सभी रोज नहीं लिखने। अब इसके अंदर भी जहाँ पर टाइप क्रेडिट है तो मतलब ये डेबिट वाला भी नहीं आएगा, तो ये भी अपने आप क्रॉस आउट हो गया। तो आंसर के अंदर सिर्फ ये आएंगे। तो पहले आपका कौन सा टेबल लिखा था? कस्टमर। तो आप सबसे पहले लिखेंगे नेम, दूसरा कॉलम आपका होगा टी डेट, थर्ड कॉलम आपका होगा अमाउंट। नाउ नेम के अंदर सबसे पहले जो आपका आंसर आएगा विच इज इंदिरा, वो यहां से आएगा। उसके बाद आपको लिखना है टी डेट। अब टी डेट तक आप कैसे पहुंचोगे? पहले आपको AC नंबर देखना पड़ेगा। AC नंबर आपका यहां पर है, दिस इज द डेट। सो यू विल जस्ट राइट 2020-01-01 एंड अमाउंट इज 2000। नेक्स्ट इज अंकिता, यू विल राइट अंकिता हियर एंड अंकिता के लेफ्ट में लिखा है C5 के लिए आपको इधर आना पड़ेगा। C5 की अब आप डेट देख सकते हैं 2019-12-31 एंड अमाउंट इज 1500। तो इसके साथ आप इसका आउटपुट भी लिख सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ये भी क्वेश्चन कुछ सिमिलर आपको दिख रहा होगा। इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर भी दो टेबल है, कस्टमर और ट्रांजैक्शन, बट इसके अंदर क्वेश्चन इज लिटिल डिफरेंट। इट सेज
Display all the information, it means display all the columns about customer. customer मतलब इस टेबल पे आप आ जाएंगे whose name starts with capital A. तो जब भी हम ऐसी बात करते हैं कि कोई पैटर्न हमको मैच करना है तो वी यूज लाइक ऑपरेटर. तो इसके अंदर क्या आएगा आपका, लास्ट में आप लिखेंगे नेम लाइक एंड कैपिटल ए से स्टार्ट मतलब A%. तो पूरी क्वेरी विल बी select star from customer where name like A%. next question, display the name and balance of female customers. so हमें यहाँ पर female customers का ही चाहिए with gender as F whose transaction date is in the year 2019. so यहाँ पर दो conditions हैं. नंबर 1, जहाँ पर transaction date आपका 2019 हो and gender female हो तो हम क्या लिखेंगे, और टेबल कौन सा है, कस्टमर. सो वी ओनली नीड नेम एंड बैलेंस ऑफ फीमेल्स ओनली. एंड अनदर थिंग इज हमको टी डेट भी चाहिए विद ईयर एज 2019. सो दोनों टेबल्स को हमको ज्वाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज हम यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे. तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे सेलेक्ट नेम कॉमा बैलेंस फ्रॉम कस्टमर कॉमा ट्रांजैक्शन वेयर. अब दोनों टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए कॉमन कॉलम देखिए एसी नंबर है, लिखेंगे वेयर कस्टमर डॉट एसी नंबर इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन डॉट एसी नंबर एंड ट्रांजैक्शन डेट 2019 के अंदर है तो क्या लिखेंगे, एंड टी डेट लाइक 2019%. ठीक है, हमको भी टी डेट लाइक 2019% लिखना पड़ेगा. एंड उसके बाद आपको लिखना है एंड जेंडर इज इक्वल टू एफ. ये तीन चीजें लिखनी पड़ेंगी तभी आपका दोनों टेबल से डेटा फेच होगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स फॉर ईच जेंडर. आपको अगेन अब जेंडर के अबाउट क्या करना पड़ेगा, ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे एंड काउंट करना पड़ेगा. तो आंसर इज सेलेक्ट जेंडर कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम कस्टमर ग्रुप बाय जेंडर. डी पार्ट, display customer name and balance. So customer name is here, balance is here in ascending order of gender. So you can also do that. You will write select name comma balance from customer order by gender. ascending order अपने आप आता है आपका. Fifth part, to display customer name and the respective interest. So अगर बात की जाए customer name की, वो मिलेगा आपको यहाँ से, and interest आपको मिलेगा as it says 8% ऑफ बैलेंस से. तो आपको इसका 8% कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड द हेडिंग शुड बी इंटरेस्ट. तो आपको एक एलियस लिखना पड़ेगा. अब कैसे होगा, सिलेक्ट नेम कोमा 0.08 टाइम्स बैलेंस स्पेस इंटरेस्ट फ्रॉम कस्टमर. ये आपको क्या देगा, इसकी क्वेरी देगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. As you can see, again there are two tables, furniture, suppliers, and you have to display details of all the furniture from table furniture which are either glass or leather. So furniture table के अंदर हमको सिर्फ दो ही values पे query run करनी है where the material is either glass or leather. So we can use in operator. How? By writing select star from table name where furniture in round bracket leather comma glass. Next is to display the F number, F name, quantity of those furnitures from table furniture whose quantity is more than 100. So we have to print F number, F name and quantity of those furnitures. These three columns of only those furniture where quantity is more than 100. You will just write select F number comma F name comma quantity from furniture where quantity or QTY is greater than 100. Moving on to the next question, we have to count number of suppliers from table supplier whose turnover is more than 25 lakh, or is it 2.5 CR, whatever it is. What we have to do is we have to count the number of suppliers. So apparently we will be using count star function from the table suppliers. So we will just write select count star from table name which is supplier where turnover is greater than 2.5 CR to display details of all furnitures from table furniture in descending order of FN. Same question as we have already discussed. Just write select star from furniture order by FNO
DESC. So you will just write this command to print everything and arrange it in the descending order of furniture. Next, question number 5. It is output based question. So very easy question. Just write max turnover, which is, I think this one is the max one, and min, which is this one. Next one, select sum of quantity material from furniture group by material having count star greater than 2. Again, very easy question. You just have to group by material, and only those groups have to be considered where the count is more than 2. It means 3 or more. So let us focus on the table furniture, and you will see wood, leather, metal, plastic. These are 4 groups. Now wood is coming 2, 3, 4. Wood is coming 4 times. Next is leather. Leather is coming only 2 times, so it will not be considered. Metal is coming 1, 2 times. Metal will also be discarded. Last is plastic, only 1 time. Glass is 1 time. So we will only be considering wood. And we have to print the sum of quantity and name of material. So you can just count it down. 12 plus 300 plus 45 plus 300. So it will be equal to 657. Moving on to the next question. Question 7. Select distinct material from furniture. Again a repeated question. You can just write all the different materials from the table furniture. Next one, select F name, S name from furniture F. Let's focus on it. F name, S name from furniture, comma supplier, where IDs are matching and quantity is 300. So let's first focus on quantity equal to 300, 1, 2. So there are only 2 rows with quantity 300, and now we will focus on only these 2 rows. You can highlight these rows like this. Now you have to join these, and let's focus if the IDs are same or not. So F12, F15 and S02, S01, S02, S01. So sub IDs are present in both the tables. Now we will print the output. So since we have to print F name first, F name is here, write classic chair. After that S name. To reach to the S name, we would be needing S02. On S02, there is shine and cut. So we will write shine and cut. And after that, move on to the next entry, which is dining chair. And on S01, the S name is wood finishers. So this question was again similar to the ones we have already discussed. Moving on to the next question. Moving on to the board examination paper of 21-22. Yes, the latest one. So these questions were asked in the latest board examination question paper in the term 2 question paper. As you can see, there is one table called member, and the question is basically from the last chapter, the interfacing of Python with SQL, and it says that assume that required library for connection is already imported, and the database name is same as the database connection for table member, and etc. So basically there is one code and we have to predict the output. There is the table given. So let's focus on the code. We are creating one cursor object, executing the query with the help of cursor object. The use club query is going to activate the database club, and we are then executing the query select star from member where activity is equal to gym. So this query obviously is going to select all the columns from the member table where activity is equal to gym. So you can see in this table activity is equal to gym for these 3 records, and here you are fetching only one row. So this will hold first row, and then you are running a for loop 2 times, which is going to run 2 times. As you can see, range of 2 is going to give you values from 0 to 1. So this is going to run 2 times. You are again fetching the row. So this is going to fetch, can you guess it? Yes, it is going to fetch the second row. क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने first row fetch कर ली थी. Now this is going to fetch second row,
and then you are printing r of 0. Again, जब आपके पास यहाँ पर रो आएगी, it will be in the form of tuple. It will be like M1002 Pratik and Jim. And in this tuple, you are printing r of 0, r of 1 with a separator of hash. So r of 0 is this one and r of 1 is this one. So you will just write M1002 hash, then Pratik. Then this loop is going to run again, and then you're going to fetch next row, which is this one, and you will print M1003 hash Simon. Alright, this is going to be the output of the said code. Moving on to the next question. Then we have this question. We have a table called vaccination underscore data, and we have to write outputs of the given queries. So first of all, select name, age from vaccination data where dose2 is not null and age is greater than 40. So first of all, the dose2 must not be null, so only these three rows will be considered, and age is greater than 40. So these two will be considered. So we are eliminating this one, this one, this one. So we are going to print only the records and specifically the name, age of these two entries only. So the output will be. Moving on to the next question. As you can see, select city, count star from vaccination data group by city. तो आप इसके अंदर अगेन देखेंगे कितने ग्रुप्स बनेंगे सिटी के. फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप. ये तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर आ गया था, ये थर्ड ग्रुप और ये सेकंड ग्रुप है. सो बेसिकली देयर आर 3 groups, group 1, group 2, group 3. All right, now what we have to do is we have to write the city or basically the group name, and then we have to count the number of members in that group. So we will write city Delhi, count star will hold 2. Next is Mumbai, count star will hold 2. Then Kolkata, it will hold 1. Next question. Select max of dose 1. Again, max of dose 1 means this is a date. So max of date is the latest one. So latest date obviously will be 1st of January 2022. Min of dose 2. Now minimum of dose 2 will be the oldest date. Oldest date here is 2021 or 2021-07-20 from vaccination data. So this question is also complete. So here you can see that we have two tables. Table number 1 is doctor, table number 2 is patient. Next, we have to write the outputs of these two queries. So select D name, P name from doctor, natural join patient. So if you remember, when we were discussing the join in a table, we discussed that there were two ways in which you could join two tables using a natural join. First one was a little longer method and second one was to simply use natural join. So when you are using this way, this method in which you are just writing natural join patient, what this would do is this is going to join these two tables about the common column. So let's see how it's done. So you are writing D name. So first column that is going to be printed is D name. Then you're writing P name. Alright. After that, since you have written first table as doctor, go to this entry D name Amitabh. Just write Amitabh, and the P name can be fetched using any common column, which is here D number. Go to this D1, and here D1 is Noor. So just write Noor. Next is, if you could see in this table, there is another row with the D number of D1. So this is also going to be printed against Amitabh. So write Amitabh again and then write Harmeet. Why I am writing it twice is because when you are joining two tables, consider that we are performing a Cartesian join and then we are filtering out the unnecessary records. So अगर दोनों के बीच में क्रॉस जॉइन लगाया जाता तब भी ये रो ऑब्वियसली 4 टाइम्स आता, बट हमने कंडीशन क्या लगाई, तो D1 दोनों में सेम होना चाहिए, तो ये वाला रो तो वैलिड है, ये इनवैलिड, बट दिस इज अगेन वैलिड ना. दैट इज व्हाई द अमिताभ वाला रो इज गोइंग टू अपीयर ट्वाइस. Next is D2 Aniket. Write Aniket here,
Aniket के against लिखा है D2, so go to another table D2 and see the patient name is Annie, so Annie, right? Next is D3, क्या इस रो इस टेबल के अंदर D3 है? Answer is no, so this is not going to be present in the natural join. And last one is D4, again this is also not present in the patient table, so this is the output. Moving on to the next question. Now focus on this question, the differentiate between candidate key and primary key in context of relational database model. And we have already discussed this question in the previous paper, so please go through that. Next is consider this table player, okay, and write the name of the most appropriate column which can be used as primary key. So if you go through this, the P number is the most appropriate column. As you can see, they are unique values and non-null values. Next is define the term degree. Degree is the number of attributes, number of fields or number of columns in a relation. And what is the degree given table player? So degree is the number of columns, so 1 2 3, degree is 3. Next is we have one SQL table items which contains the following columns, and we have to write a SQL command to remove the column discount. In order to remove a column, the command, the query that is used is alter table. And when you're using alter table command, there are basically three options. First is add, second one is drop, third one is modify. You can use any of these three options to perform different operations. When we have to drop a column or we have to remove a column, we use the drop option. So we will write alter table, then the table का नाम which is items, drop column का नाम which is discount. So the query becomes alter table items, drop discount. Moving on to the next question. Now next one is very important question. We have to categorize these commands into either DDL or DML. So data definition language, there are actually three commands which can be categorized as DDL. They are create, alter, drop. So create and drop will be data definition language, and DML, there are basically four commands: select, insert, update and delete. So update and insert will be data manipulation language. Basically these commands work on a table structure and these ones work with data. So you can remember them as कि जो भी कमांड डेटा के साथ काम करेगी, तो जो कमांड्स आपकी डेटा के साथ काम करती हैं, दे आर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, बाकी आपकी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. रोहन इज लर्निंग टू वर्क अपॉन RDBMS application. So he has to open the database named library. So when you have to open the database, you write use database का नाम. So you will write use library. Next is to display the names of all the tables stored in the open database. For that you write show tables. Next, to display the structure of the table books existing in the already open database library, write describe or DESC आगे table का नाम which is books. It is going to give you the metadata. So the next question is, you have two tables, again as usual, two tables. Number one is passenger, flight, and we have to write queries. Okay, nothing new about that. So we have to write a query to change the fare to 6,000 of the flight whose F number is F104. So the table is flight and जिस फ्लाइट का F नंबर F104 है, मतलब ये हमको इसका फेयर 6000 कर देना है, मतलब इसको चेंज करना है 6000 में. तो इसके लिए वी आर गोइंग टू यूज अपडेट कमांड विच गोज लाइक दिस. यू राइट update table name which is flight, set column name which is fare equal to 6000 where. अगर आप where नहीं लिखोगे तो पूरे कॉलम की वैल्यू चेंज हो जाएगी. दैट्स व्हाई मेक श्योर यू राइट where F number is equal to F104 and this is a string, that is why also put quotes around it. Next is
We have to write a query to display total number of male and female passengers. Again, you have to group the table about the gender and then you have to count. So the query will be select gender, comma, count star from passenger group by gender. Next is write a query to display the name, corresponding fare and F date. So the name, let us highlight the regions again. So we have to write a query to display the name, corresponding fare, which is here, and F underscore date, and then F underscore date, which is here. So we have to print these three columns when the flight starts from Delhi. So Delhi, Delhi. Alright, so we have all our conditions in place. Since we have two tables to fetch data from, we are going to join these two tables. Alright, so we will just write and we have to search for one common column. तो common column की तरह इनमें कौन काम कर सकता है? You can see that F number can be used as a common column. So we will write select name, comma, fare, comma, F underscore date from passenger, comma, flight, where passenger dot F number is equal to flight dot F number and start is equal to Delhi. एंड मेक श्योर जब भी आप इस तरीके से लिख रहे हो और आपको यहाँ पर कोई ऐसा कॉमन कॉलम प्रिंट कराना है विच इज़ अगेन अपियरिंग इन बोथ द टेबल्स, यू राइट द टेबल नेम बिफोर दैट. इस केस के अंदर ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बट अगर इन केस आपको एफ नंबर प्रिंट कराना होता सिलेक्ट के बाद आपको टेबल का नेम पहले लिखना पड़ता, बट अगेन it is just for your knowledge. Last part, write a query to delete the record of flight which ends at Mumbai. How to delete the record? Delete की command है delete from table name which is as you can see flight, delete from flight where end is equal to Mumbai. Simple as that. Moving on to the next question, it just says what is degree and cardinality, and we have already done this millions of times, so you can just go through them. Next question is you have to focus on the table employee present in the database company, and this question is from interfacing chapter. So what we have to do is again we have to print the output. Simple question, just go through the code one by one. So you are just using company database, you are selecting everything from employee where department is equal to AC. So these three rows are being selected for printing, and then you're running a loop, you're fetching the first row, and then you're printing the values separated by hash. We have done the similar question, so you will just write first what will be printed is first of all R of 0, which is again this H1001 hash of neath will be printed. We have already discussed how. Next, since it is going to run 2 times, this row is going to be printed with A1003 hash Amina, and that's it. You might say कि तीसरा रो भी प्रिंट होना चाहिए, बट वो तभी होगा जब fetch 1 को आप 1 more time रन करोगे, बट इस केस के अंदर क्योंकि ये लूप 2 बार रन कर रही है एंड fetch 1 भी 2 बार रन करेगा, so we are only going to fetch first 2 records as discussed in the theory. Again we have 2 tables, and in these 2 tables, one is flight, one is passenger. You have to print name, depart. It means the name is from this table and depart is from this table. Natural join passenger. So simple question, you just write first you will write name, then you will write depart, and first name will be Prakash, and प्लीज चेक करो कि दोनों टेबल किस कॉलम के अबाउट कंबाइन कर रहे हैं. तो F नंबर F101 F101, F103 F103, F105 F105. तो ओनली ये 3 रोज ही कंबाइन होंगे, बाकियों को आप नहीं देखेंगे. सो नेम सबसे पहले आएगा प्रकाश, डिपार्ट इज दिल्ली. नेक्स्ट इज नूर फ्रॉम F103 which is Mumbai. Next is Harmeet, null, so it will not be considered. And Annie F105 Mumbai, so just write Annie here, Mumbai will come, and this is the output. Last one is select name, fare from passenger, flight where F number is equal to P dot F number and depart is equal to Mumbai. So इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, हमें प्रिंट करना है नेम, सो नेम ये रहा, फेयर ये रहा,
दोनों टेबल्स को ज्वाइन करेंगे। हमने पहले भी चेक किया था, दोबारा चेक कर लेते हैं। एफ नंबर सिर्फ और सिर्फ इन 3 रोज का मैच कर रहा है। एंड डिपार्ट इज मुंबई, सो डिपार्ट इज मुंबई इस केस के अंदर और इस केस के अंदर। सो यहाँ पर हमारा सिर्फ जो डेटा प्रिंट होगा, नंबर 1 विच इज नूर एंड एनी, यू विल राइट नूर एंड एनी, एंड द फेयर विच इज नूर का फेयर है 5500 एंड एनी का फेयर है 5000। एंड अगेन इसका हेडिंग क्या आएगा? हेडिंग विल बी नेम एंड फेयर। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। आई थिंक यू हैव हैड इनफ प्रैक्टिस ऑलरेडी। Okay, moving on to the next question, primary key. We have already done this question. So moving on to the next question, consider this table, batsman, and you have to identify the candidate keys in this table. So candidate keys कौन सी keys होती हैं? ऐसे column which can uniquely identify a record. So P number can be a candidate key. Since names are not repeating, it can also be a candidate key. Scores कैन नॉट बी ए कैंडिडेट की, क्योंकि यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज आपको दिख रही होंगी। सो कैंडिडेट कीज आर पी नंबर एंड नेम। हाउ मेनी टपल्स आर देयर? टपल मीन्स रोज या फिर रिकॉर्ड्स। देयर आर 1 2 3 4 5 टपल्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एज यू कैन सी अ सीक्वल टेबल बुक्स कंटेन फॉलोइंग कॉलम नेम्स, दिस कॉलम्स, एंड सीक्वल स्टेटमेंट आपको लिखनी है टू एड अ न्यू कॉलम रिव्यू to store the reviews of that book. So the reviews are in the form of, I think reviews are in the form of string. So you can write alter table, table का नाम which is books, add review varchar, let's say 1000 character के reviews maximum आप लिख सकते हो. Next query, any two commands of DDL and any two commands of DML. We have already discussed this in detail. Last question 10th. Rashmi has forgotten the names of database, table and structure of the tables that she had created in RDBMS. Poor Rashmi. Moving on to the A part. Write a SQL statement to display the name of all the database present in RDBMS. So जब भी आपको databases की list देखनी होती है, the query that you run is show databases. Statement which should execute to open the database stock. Right, use stock. Now आपके पास एक टेबल है आइटम्स, डेटाबेस जो ओपन किया हुआ है स्टॉक, तो आपको उसके अंदर आइटम्स का स्ट्रक्चर चेक करना है। तो वो कैसे किया जाता है? डिस्क्राइब आइटम्स। सो वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, वी हैव टू टेबल्स, कस्टमर, ट्रांजैक्ट, एंड यू हैव टू राइट अ सीक्वल स्टेटमेंट टू डिलीट द रिकॉर्ड्स हुज अमाउंट इज लेस देन 1000. सो सिंपली राइट डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम विच इज ट्रांजैक्ट, वेयर अमाउंट इज लेस देन 1000. पहले का आंसर ये आ गया। सिंपल क्वेरीज है। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द टोटल अमाउंट ऑफ ऑल डेबिट्स एंड ऑल क्रेडिट्स. सो बेसिकली यू हैव टू ग्रुप देम अबाउट टी टाइप एंड देन you have to print the sum. So what you will do is you will write select T type comma sum of T type from amount from transact group by T type. Next query and the last query of this long video, write the SQL statement to change the phone number of customer whose C number is 1002 to this in the table customer. So the simple query is update table का नाम which is customer, set column name which is phone number. So update customer, set phone equal to 9988117700 where C number is equal to 1002. Alright students, with this we complete the first part of this question series. इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने आज तक पिछले 10 सालों में जितने भी क्वेश्चंस, चाहे वो ऑल इंडिया के पेपर में हो, चाहे वो कंपार्टमेंट के पेपर में हो, चाहे वो दिल्ली, आउटसाइड दिल्ली, जैसे भी जितने भी पेपर्स सीबीएसई की वेबसाइट पर थे, जितने भी पेपर्स आज तक आए हैं, सभी के क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। इतना आप कर लोगे तो आई एम वेरी श्योर कि आप अपने एग्जाम के अंदर काफ़ी अच्छा कर सकते हो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व द सैम्पल पेपर रिलीज्ड बाय सीबीएसई फॉर दिस सेशन 2022 to 2023. Apart from that, we have questions
that are given in the KVS Jammu region model papers. There are 10 model papers and we will be discussing them and solving them all. So a lot is to come. Please do like this video and please leave your doubts or any comments that you might have in the comment section so that I can improve or clear them in the next video. So thank you for watching this video. See you next time.